So I think we are live. Hello, what's up guys? I think we are live and बहुत बड़ा मैच है आज, टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस लेस्टर सिटी। आई होप कि आज लेस्टर फाइनली पॉइंट सिक्योर कर पाए। एंड ब्रेंडन रॉजर्स भाई बहुत क्लोज है वैसे सैक होने से, बहुत ज़्यादा क्लोज है सैक होने से। सो देखने वाली बात होगी क्या होता है उसके साथ। बट भाई यही बात है ना, रॉजर्स का पता नहीं ऐसा टाइम इतना ख़राब हो कैसे गया। उसका टाइम इतना ख़राब होना नहीं चाहिए था। बट वट एवर हैपेंड हैज़ हैपेंड, मतलब उसका टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा है इस वक्त। आई हैव टू से दैट। एंड लेट्स जस्ट भाई मैं थोड़े थोड़े सेटिंग्स समझ लेता हूँ ज़रा। क्या है ना, थोड़ा सेटिंग्स को अच्छा करना चाहिए क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं भाई, बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। सो सेटिंग्स थोड़ा अच्छा करते हैं हम। लेट्स जस्ट मेक दिस नाइस एंड टाइडी। सो आई थिंक दैट्स ओके और that should pop up and I think that's good। और yep, that's more than good। ये मुझे ये एक्चुअली ये सेटिंग्स पसंद है। सो भाई टॉकिंग अबाउट टॉटनहम वर्सेस लेस्टर गेम एंड ये आप लोग जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हो इस साइड, दैट्स द टॉटनहम हॉटस्पर का स्क्वाड। एंड एज यू नो हैरी केन स्ट्राइकर पे है भाई, नो डाउट्स वो बंदा स्ट्राइकर पे ही खेलने वाला है विद सॉरी एंड आई फक्ड इट अप कम्प्लीटली। सेटअप फक्ड हो चुका है, आई एम सॉरी। आई थिंक सो ये सेटिंग सही है। एंड एक और चीज़ बस लाना है स्क्रीन पे। होता है भाई, होता है। चलो सो हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हैरी केन है एंड कुलुसेव्स्की एंड रिचार्लिसन, मतलब 3-4-2-1 फॉर्मेशन सेट किया है। बट बंदा गारंटी चूतिया बना रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 3-4-2-1 ये खेलने नहीं वाला। ही इज़ गोना प्ले समथिंग लाइक 3-4-3, मोर लाइक अ 3-4-3। और मुझे लगता है Richarlison will drop on the left and Kulusevski will drop on the right। And सबसे बड़ी बात, as you can see here, Heung-min Son has been dropped। Yes boys, Heung-min Son has been dropped। Gonna play something like 3-4-3, more like a 3-4-3। और मुझे लगता है Richarlison will drop on the left and yes, जैसे कि आप लोग सब देख ही रहे होगे अभी, everything is fine। So सन हैज़ बिन ड्रॉप्ड। और सबसे बड़ी न्यूज़, और मेरे हिसाब से वो डिज़र्व नहीं बोल सकते, मतलब हाँ अगर आप मैच परफॉर्मेंसेस पे जाते हो किसी के कि इसके मैच परफॉर्मेंसेस बराबर नहीं है, दैन डिज़र्व्ड आई कैन से दैट कि हाँ ठीक है। अगर कॉन्टे वो बंदा है जो प्लेयर्स के फॉर्म के हिसाब से उसको चूज़ करता है, दैन सॉन वॉज डेफिनेटली नॉट द वन टू बी पिक्ड। तो रिचार्लिसन हैज़ विल प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, कुलुसेव्स्की विल प्ले ऑन द राइट एंड केन विल प्ले ऑन द स्ट्राइकर। तो ये मुझे लग रहा है। एंड सेसेन्योंग भाई, पेरिसिच हैज़ अ डिफरेंट रोल टुडे बाय द वे। आप लोग ने पेरिसिच को नोटिस किया क्या? पेरिसिच इज़ प्लेइंग मच मोर लाइक ऑन द राइट विंग बैक, मतलब वो राइट विंग बैक से ज़्यादा कुछ डिफरेंट है। पता नहीं क्यों ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो चीज़ नहीं है यहाँ। भले 3-4-3 है, भले सेसिन्योंग है एंड पेरिसिच नॉट ऑन द लेफ्ट विंग बैक, पेरिसिच इज ऑन द राइट विंग बैक। एक्चुअली जब साइन किया था तो मैंने ये सोचा था कि उसको राइट विंग पे खिलाएगा कॉन्टे, बट उसने लेफ्ट विंग बैक पे खिलाया उसको एंड नाउ ही इज़ प्लेइंग हिम लाइक अ लेफ्ट विंग बैक, सॉरी राइट विंग बैक। और हॉइबेक एंड बेंटेंकोर मिडफील्डर्स है, पता नहीं बेसुमा को कब चांस देगा ये बंदा। एंड बैक थ्री जो मैंने प्रेडिक्ट किया था बहुत टाइम पहले ही कि बैक थ्री विल बी लॉन्गले, डायर एंड सैंचेज। यही 3 बैक थ्री परफेक्ट है मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि लॉन्गले आपने लोन पे साइन किया उसको खिलाने के लिए, वेजेस पकड़ाने के लिए नहीं। तो लॉन्गले इज़ डिजर्विंग और लॉरीज ऑन द गोलकीपर पोजीशन एज़ यूजुअल। तो आई थिंक स्पर्स की लाइनअप अच्छी है। सॉन सबसे बड़ा जो नाम है जो ड्रॉप्ड है एंड आई कांट सी द बेंच राइट नाउ, थिंक सो, देख लेंगे बाद में क्या है। एंड लेस्टर का लाइनअप बाय द वे, आई डोंट नो हु इज़ दिस गाय। आई मीन पहली बार इसका नाम देख रहा हूँ यार, ये बंदे का नाम पहली बार देख रहा हूँ मैं। एंड भाई लेस्टर में भी बहुत बड़ा नाम ड्रॉप्ड है बाय द वे, वार्डी इज़ बिन ड्रॉप्ड। वार्डी का नाम ड्रॉप कर दिया गया है
पैटसन डाका विल प्ले ऑन द स्ट्राइकर पोजीशन, यूरी टेलेमेंस, जूसबी हॉल है, मैडिसन, बार्न्स, एनडीडी, मोर लाइक एन अटैकिंग साइड लेस्टर। मे बी ब्रेंडन रॉजर्स को पता है कि स्पर्स विल कम डिफेंसिव, ट्राई टू हिट ऑन द काउंटर अटैक, तो वो पहले से एक ऐसी टीम सेटअप कर रहा है जो काफ़ी अटैकिंग है, जो मतलब वो डिफेंडिंग टीम नहीं फील होगी, या वो मिडफील्ड बैटल बहुत कम होगा, मे बी एंड टू एंड गेम टाइप का स्टफ देखने मिलेगा। लेस्टर विल ट्राई टू जस्ट अटैक एंड अटैक, मतलब ओवरलोड कर देंगे अटैक से ही वो लोग। तो आई थिंक मैच इंटरेस्टिंग होगा यार बहुत, आई हैव टू से दैट, क्योंकि डाका है, पेस है, एंड बार्न्स एंड मैडिसन हमको पता ही है कि कितने इफेक्टिव प्लेयर्स है। टेलेमंस फाइनली बंदे को शाट मिल गया, सो ड्रूसबी हॉल है, एनडीडी है फॉर द होल्डिंग मिडफील्डर, एंड ये बंदा जो है नया, आई थिंक इसको साइन किया है इसी समर, सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिमेंबर हिम, एंड जॉनी एवंस एंड वार्ड ऑन द गोलकीपर, कस्तानी एंड जस्टिन। बट लेकिन सबसे बड़ी टॉपिक रिमेन्स, जो मैंने टाइटल में भी लिखा हुआ है बाय द वे, कि ब्रेंडन रॉजर्स का लास्ट गेम, क्या ये ब्रेंडन रॉजर्स का लास्ट गेम हो सकता है? वेल यू गाइस टेल मी भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो हार गया ना यार आज, डेफिनेटली द ओनर एंड जो भी मतलब स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, दे हैव टू टेक अ सेकंड थॉट कि यार क्या ये बंदे को हम आगे लेके जा सकते हैं, इज़ ही द वन टू टेक लेस्टर वेयर दे डिज़र्व टू बी, कॉज ही हैज़ डन दैट, मतलब उसने लेस्टर को पोजीशन पे ज़रूर लाया है, बट इज़ ही द वन टू टेक देम फॉरवर्ड अगेन। मतलब जैसे आप, मुझे याद है क्लॉडियो रनेरी ने प्रीमियर लीग दिलाया था भाई, ब्रेंडन रॉजर्स कुड नेवर विद दिस लेस्टर सिटी, आई डोंट थिंक सो ब्रेंडन रॉजर्स ये लेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग के कंटेंडर्स बनाएगा। क्लॉडियो रनेरी ने प्रीमियर लीग चैंपियंस बनाया था लेस्टर को, एंड ही वाज ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट सीजन, तो मुझे लगता है कि ब्रेंडन रॉजर्स हारने के बाद दे विल हैव अ सेकंड थॉट, दे विल थिंक अबाउट इट, and they could eventually drop him, if I'm being honest. That's true by the way, they can drop him, so I think ये बहुत ही बड़ा concern है for Brendan Rodgers, and he has to get this right this time. I think they have 0 wins right now in the Premier League. Let me just cross check that. They have 0, I mean I'm pretty much sure they have 0 goals in the Premier League this 0 wins, I mean in the Premier League this season. Let me just check, because they are 20th on the league table, तो वो भाई सीधा सीधा दिखाता है, yes they have 0 wins, they are the only team with Everton who are winless right now, but Everton क्योंकि ऊपर है, they have 4 draws, और Leicester only has 1 draw and 5 losses. भाई this is a disaster for Brendan Rodgers, and मैच स्टार्ट होने में वैसे कुछ ही टाइम रह गया है, करेक्टली बोलूँ तो 5-6 मिनट है, and Antonio Conte the manager and Brendan Rodgers the manager lining up with the Premier League teams, and as expected मतलब 1 मिनट की शांति होगी for the majesty queen, तो आई होप या ब्रेंडन रॉजर्स अपना मतलब बोलते हैं ना पोजीशन सेव कर पा। इट्स अ ह्यूज गेम फॉर ब्रेंडन रॉजर्स, इट्स द वन गेम ही हैज़ टू गेट इट राइट यार। Imagine if he fails. I'm just saying by the way. Imagine he fails. If he fails, it's all over for Brendan Rodgers. I think so. मेरे हिसाब से it's all over for Brendan Rodgers. But देखते हैं क्या होता है. Players are on the pitch right now, and they'll take their position in their boxes for Her Majesty the Queen. और आई थिंक 1 मिनट का साइलेंस होगा ऑन द रेफरीज विसल। देखने वाली बात होगी क्या होता है बाय द वे। तो भाई मुझे वही चेक करना था कि टीवी का आवाज़ आ रहा है कि नहीं, मतलब मेरे स्ट्रीम पे तो टीवी का आवाज़ आ रहा है। आई थिंक मुझे उसको थोड़ा लोअर करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स इनफ। एंड बाय द वे ये मैच स्पर्स का होम ग्राउंड पे हो रहा है, इफ़ यू ऑलरेडी डिडंट न्यू। सो रेफरीज एंड एवरीवन हैज़ लाइंड अप, एंड
RIP टू द क्वीन बाय द वे। देखते हैं क्या होता है, हमारा कोहिनूर तो ले गई, लेकिन ठीक है। कोई भी कोई भी देश के क्वीन या किसी भी देश के हम मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े पावर्स को, हम जो अच्छे लोग रहेंगे उनको हम लोग यही कह सकते हैं भाई उन्होंने अपने देश के लिए काम किया है, सो रेस्ट इन पीस, बस इतना ही बोलूँगा। सो 1 मिनट का साइलेंस अभी ऑन द ग्राउंड। एंड इंग्लैंड का नेशनल एंथम अभी। दे हैव लॉस्ट देयर मेन पावर, मतलब क्वीन बहुत बड़ी थी उनके लिए। आई मीन मेरे हिस्ट्री से बाहर है भाई, मेरी उम्र ही कितनी है, सो मेरे हिस्ट्री से बाहर है ये सब चीज़ें। सो द मैनेजर्स गोइंग बैक टू देयर पोजीशन भाई, अपने अपने पोजीशन पे वापस जाते हुए आफ्टर द साइलेंस एंड द नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड। सो गेम टाइम भाई, फाइनली गेम टाइम। इतना साइलेंस हो गया था ना, मतलब कान में पूरा बोलते हैं ना बहुत ही अजीब सा साइलेंस क्रिएट हो गया था। एंड आई मीन वी आर जस्ट अ मिनट और टू अवे फ्रॉम द गेम किक ऑफ। एंड लेस्टर, ह्यूज गेम फॉर ब्रैंडन रॉजर्स, जो मैं काफ़ी टाइम से रिपीट कर रहा हूँ। इट्स अ मैसिव गेम। इफ ही गेट्स इट रॉन्ग, इट्स गेम ओवर फॉर ब्रैंडन रॉजर्स बाय द वे। आई थिंक सो दैट। आई डोंट नो कि स्पर्स के बोर्ड कैसे इसको देख, लेस्टर के बोर्ड कैसे देखते हैं इसको, बट आई थिंक इट्स गेम ओवर फॉर ब्रैंडन रॉजर्स इफ़ ही गेट्स इट रॉन्ग। इसीलिए मैंने टाइटल लिखा है ब्रैंडन रॉजर्स लास्ट गेम क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी है, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो सकता है। लेट्स सी। आई होप दिस टू बी एन एंड टू एंड गेम। मुझे नहीं लगता बोरिंग गेम होगा, क्योंकि लेस्टर हैव सेट देम सेल्फ टू बी एन अटैकिंग साइड, एंड ऑन द पेपर ऐसा लग रहा है, एंड स्पर्स आर मोर ऑन द डिफेंसिव साइड। सो आई थिंक एंड टू एंड गेम हो सकता है। श्योरली द बॉल वुड रोल इन टू द वन एंड कॉन्स्टेंटली। सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आई थिंक आई फक्ड अप अगेन। नो, बच गया। सो वी आर वेरी क्लोज टू द किक ऑफ। इसीलिए आपको स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा है ना, दिस विल फ्लिकर एंड यहाँ पर एक लाइव गेम प्ले स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। एंड इट विल जस्ट स्टार्ट नाउ बिकॉज किक ऑफ हैज़ बीन टेकन विद लेस्टर सिटी। एंड लेट्स सी, बिग गेम फॉर ब्रेंडन रॉजर्स, बिग गेम। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो भी स्कोर रहेगा एंड जो भी प्ले चल रहा है लाइव। सो लेस्टर विद द बॉल राइट नाउ, कॉन्स्टेंटली पासेस थ्रेड करते हुए। सेसेनियोंग ऑन द बॉल, रनिंग ऑन द फ्लैंक्स, क्रॉस इट इन। अरे रे रे, हैरी केन बाय द वे, अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो हैरी केन वाज द एक्स स्पर्स मैन, एक्स स्पर्स प्लेयर।
So let's see how it goes. स्पर्स पोजीशन पे है. बस यार स्पर्स गेम बोरिंग मत कर देना यार. स्पर्स का थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि स्लो खेलने के चक्कर में गेम बोरिंग कर देते हैं. मतलब वो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगा. पासेस थ्रेड कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड. कोशिश कर रहे हैं स्लो बिल्डअप करने की, लेकिन इतना स्लो हो जाता है ना यार कि मतलब डेस्क पे मन करता सो ही जाऊँ मैं यहाँ पर. मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है. It's good to see, by the way, Perisic is lining up on the right wing back. He will play more like a right back on that side. So let's see what's the result today. Harry Kane threads in a ball. Too much for Kulusevski right now. Cleared up by James Justin. So Justin is a very good player. I think Justin is a very good player, but he needs to prove himself. Leicester needs to get this win today. भाई वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर लेस्टर सिटी. आई हैव टू से दैट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. स्पर्स करंटली डोमिनेटिंग द बॉल. रिचार्लिसन. एंड यस, रिचार्लिसन से मुझे एक टॉपिक याद आया. रिसेंटली आप लोग ने देखा विनीसियस जूनियर के साथ क्या हुआ. विनीसियस जूनियर को मतलब किसी बंदे ने रेसिस्ट मार्क किया है उसको. आई मीन ही कॉल्ड हिम कि वो जो भी डांस वांस करता है आफ्टर सेलिब्रेटिंग अ गोल, एंड जो भी कभी कभी पिच पे भी वो ये सब चीज़ें करता है, तो बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें यार अपने ब्राज़ील में जाके करो, डोंट डू इट इन ऑन स्पेन. मतलब स्पेन की टीम से मत किया करो, गिव देम रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह. तो उसने ये सब बोल के उसको लास्ट में मतलब मंकी एलिगेशन लगा दिया उस पर. मतलब बोल दिया कि कैसे बोल सकता है वो. आई डोंट नो भाई. मतलब दैट्स अ रेसिस्ट मार्क टू से टू विनीसियस जूनियर बाय द वे. सो रिचार्लिसन एंड बहुत सारे ब्राज़ीलियन प्लेयर्स ने उसको सपोर्ट किया है. सो वो आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ कहीं पे. बट येस, स्पर्स ऑन द पोजीशन बाय द वे. हैरी केन, Richarlison was caught napping. Leicester recovered the ball and will try to counter attack. Maddison just crosses the ball beautifully but just short, and Leicester have recovered once again. That's a foul, but advantage given. Nicely done by Leicester City. They are on the attack. That's a penalty or a foul. That's a penalty. That's an early penalty for Leicester City in the game. Just 3.5 minutes on the clock and Leicester City have a penalty. Eric Dyer the culprit, and I don't know who was the guy who was fouled in the box. I think is it just outside the box? It was James Justin, and it's just on the line, by the way. It's just on the line. It is on the line. The line is this thick, and it is just like here. It's on the line. I think it will be given as a penalty because line belongs to the referees. And yes, penalty has been given. Please say link. For what? Tillemans with the penalty. Saved by Lloris. Lloris have saved the penalty. भाई Lloris ने penalty save कर लिया. That's what Leicester City didn't need यार. इतना जल्दी अगर आप इतने अच्छे टाइम पे गेम में अगर आप पेनल्टी मिस कर दोगे ना, that's it. Leicester, that's the worst possible start. Ooh, was Lloris off the line? Penalty retaken. Penalty to be retaken. My goodness, everything is happening right now. Penalty to be retaken. Everything is happening right now. Lloris is furious with himself. Oh my goodness. Even I thought so. He jumped too early. Yes, he was off his line. He was off his line. So that's a great decision by the referees, the VR referees. So if Tillemans doesn't, score this, it's gonna be all drama. It's gonna be all drama. Let's see. Tillemans on the ball again. He has to score this time. They are missing Vardy on the penalties, by the way. So let's see. Tillemans score this time. Tillemans scores this time. Tillemans scores this time and just
silences the Tottenham Hotspur crowd, and Loris is furious. Loris is furious with himself. I think that off the line save from Loris has just saved him. भाई किस चीज़ का लिंक मांग रहे हो भाई, मेरे को समझ नहीं रहा है. द लाइव गोइंग ऑन हियर, जो यहाँ फुटबॉल चल रहा है ये, या फिर जो टीवी पे मैं देख रहा हूँ फॉर दैट, किस चीज़ की लाइव मांग रहे हो भाई. इफ़ यू आर आस्किंग कि भाई मतलब हाउ एम आई डूइंग दिस, तो ये साइट है. एंड इफ़ यू आर आस्किंग द मैच लिंक, तो वो तो भाई आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी ऑनलाइन. ऐसे तो फिर या तो अगर आपको सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो आप ट्विटर पे जाके हैशटैग्स डाल लो एंड यू विल फाइंड अ लाइव मैच गोइंग ऑन. Leicester on the ball again right now. Spurs have recovered. Spurs have to attack now. ये बहुत अच्छा हो गया गेम के लिए, पता है कि अर्ली गोल चला गया, क्योंकि अब स्पर्स के बाम्बू लग चुके हैं. स्पर्स हैव टू स्कोर, नहीं तो उनकी टीम तो हमको पता है भाई. याद है जब यूनाइटेड में जोसे मourinho यूनाइटेड को चलाता था, यूनाइटेड तब तक बोरिंग खेलती थी जब तक उनका गोल नहीं आ जाता, नहीं तो सामने वाले का गोल नहीं आ जाता. आई मीन टू से दैट तब तक वो बोरिंग खेलते थे. एंड जैसे ही कोई सामने वाला गोल मारा, यूनाइटेड यूज्ड टू स्विच ऑन लाइक क्रेजी. मतलब यार इतना अटैक करते थे वो लोग, ऐसा लगने लगता था भाई ये टीम कहाँ थी पहले. गुड टू सी. कुलुसेस्की विल टेक द कॉर्नर. Corner is a big asset for Spurs, by the way. They are very good on corners. Kulusevski, I think he will try the shot. Crosses it in. Kane! So it's a goal. It's 1-1. The game is crazy right now. I think the link. Yes. भाई देख लो यहाँ. I missed it. हैरी केन विद द गोल. 8 मिनट में 2 गोल देख लिए भाई, 8 मिनट में. मैंने पहले ही कहा था कि एंड टू एंड गेम लग रहा है मुझे. ना, ही इज ऑन साइड. आई थिंक जो प्लेयर आगे था ना, उसने प्ले ऑन कर दिया हैरी केन को, नॉट हैरी मैग्वायर बाय द वे. हैरी मैग्वायर हैज बीन ड्रॉप्ड. यहाँ मैडिसन, इट वाज मैडिसन हु प्लेड ऑन. मैडिसन ने प्ले ऑन कर दिया भाई हैरी केन को. सो लेस्टर किक ऑफ करते हुए. So it's 10 minutes in the game and the score is 1-1, Tottenham versus Leicester. And bhai, Leicester scored through a penalty of Yuri Tillemans and Tottenham have scored through the Harry Kane's header assisted by Kulusevski. तो यार आपको पता है मैंने सन को निकाला था अपने FPL से जस्ट इसी वीक, क्योंकि मुझे पता था कि सन शायद स्टार्ट नहीं करेगा. उसका फॉर्म ना बहुत ही ख़राब चल रहा है यार. Spurs almost in again for the second goal and that's a foul. भाई क्लियर फाउल था यार, किस चीज़ के लिए लड़ रहा है. हैरी केन इज़ अ मशीन यार. हैरी केन, पता है आपको, हैरी केन यूज्ड टू बी अ लेस्टर सिटी प्लेयर. तो हैरी केन यूज्ड टू बी अ, not used to be a, he is now a machine, but he used to be a very good player for Leicester. But Leicester का अटैक इतना पैक था ना, if I remember, उनका वार्डी था, केन था, एंड एक और कोई प्लेयर था जो टॉप क्लब में गया. तो आई मीन 3-4 प्लेयर्स थे उनके पास. तो मिस्टेक है भाई फ्रॉम लेस्टर टू ड्रॉप हैरी केन. एंड लुक व्हाट हैरी केन हैज़ प्रूव्ड बैक. व्हाट अ स्ट्राइकर ही इज़ यार.
Tottenham with the ball again. Richarlison on the ball. Richarlison. Nicely done by Sessegnon. Ooh. Will be recovered by Richarlison. And throw in. Throw in for Tottenham Hotspur. Dyer. Perisic and tried a smart flick by Richarlison, tried a smart flick but काम नहीं आया. मैडिसन इज़ अ वेरी गुड प्लेयर भाई. मैडिसन को ना कोई अच्छी टीम मतलब टॉप 6 में कुछ ट्राई करनी चाहिए. अगर क्रिएटिव प्लेयर चाहिए देन दे शुड ट्राई मैडिसन. आई थिंक मैडिसन के पास वो सारी क्वालिटीज़ है कि वो कोई मतलब बड़ी क्लब्स के लिए खेल सकता है. और वो यूरोप में खेलना चाहिए यार. ही इज़ वेरी अनलकी नॉट टू प्ले इन यूरोप. आई थिंक मैडिसन इंग्लैंड स्क्वाड के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है इफ आई एम बीइंग करेक्ट. Nice distribution from Lloris. Sessegnon. Decent pass to Kane. Recovered by Sessegnon again. Richarlison look the ball forward. बहुत ही बढ़िया पास towards Perisic. Perisic moving forward. Perisic बहुत ज़्यादा टच हो गया. हैंडबॉल के लिए अपील करते हुए बट लेस्टर आर ऑन द अटैक. बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश एंड दे हैव लॉस्ट द प्ले बट रिकवर्ड अगेन. डाका. पास था भाई. फार पोस्ट पे पास था. यहीं गलतियां होती है पता है. यू कांट बी सेल्फिश. आज टीम प्ले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू कांट बी सेल्फिश. भाई देखो अब तक तो रिचार्लिसन मुझे काफ़ी सॉन के मुकाबले कुछ बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. इससे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि सॉन को बिठा के ना गलती किया है इसने. कॉन्टे हैज़ मेड अ मिस्टेक बेंचिंग सॉन. मे बी भले वो फॉर्म में नहीं था बट यू हैव टू बैक दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर. भाई एक बार वो रन पे निकल गया ना बंदा सॉन. यू जस्ट कांट स्टॉप हिम. सो आउट ऑफ फॉर्म भले था बट ही कुड हैव गॉट बैक इन फॉर्म. टू मच फ्रॉम हैरी केन एंड Leicester have recovered the ball again. James Justin on the ball. Leicester players मस्त बोलते हैं ना अब थोड़े काम लगने लगे बॉल पे. दे आर फाइनली ट्राइंग टू स्टिच पासेस. बट यही पासेस जब आप बॉक्स में पहुंच रहे हो ना स्पर्स के, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द बॉल. तो ऐसे अंधाधुंधी शॉट्स नहीं ले सकते ऑन गोल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. भाई पोजीशन अच्छे से यूज़ करो. लेस्टर बस पोजीशन घुमाते हुए अभी एकदम प्रॉपरली. Spurs trying to press high now. Leicester nicely moving the ball very nicely. Spurs holding the line of fire at the back. Leicester City distributing on the flanks. Maddison trying too much. Good shot. Pink. क्या pink? अच्छा. What the fuck, goals already? Yes. ऑलरेडी गोल्स आ गया है भाई. क्रेजी 10 मिनट था. मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि
दिस कुड बी अ वेरी गुड गेम, क्योंकि लेस्टर ने अपने आप को हाई लाइन के लिए फॉर्मेशन किया था एंड टॉटनहम एज यूजुअल कॉन्टे का फॉर्मेशन डिफेंसिव। तो मुझे लग रहा था एंड टू एंड गेम होने वाला, ऑलरेडी अ पेनल्टी गोल बाय टेलेमेंस बाय द वे, और हैरी केन का हेडर ऑन द बैक पोस्ट। सो और अभी भी अटैक बन रहे, अभी भी गोल्स आएंगे। दिस कुड बी अ वेरी गुड गेम मुझे लग रहा है। और जो भाई टाइटल में पहले ही लिखा है ना उसको देख लो नीचे, एक्चुअली मैं ऊपर का इशारा कर रहा हूँ, नीचे टाइटल देख लो। इट कुड बी ब्रेंडन रॉजर्स लास्ट गेम बाय द वे, आई एम बीइंग सीरियस। मुझे लग रहा है अगर वो हार गया ना, इट्स हिज लास्ट गेम। ठोक के ले लो, मुझे लग रहा है भाई। हैवी टच बच गया भाई, वरना रिचार्लिसन वाज ऑन। भाई स्पर्स के प्रेसिंग में ना वो दम नहीं है भाई, पेस ही नहीं है प्रेसिंग में। वो हैरी केन भागता है तो ऐसा लगता है कि कोई एकदम भारी आदमी भाग रहा है। मगवार भागता है कैसे देखो डिफेंडिंग के लिए, वैसी फीलिंग आ रही है उसको देख के। क्लियर्ड अवे ऑन द डिफेंस। लेस्टर लेस्टर बहुत अच्छी है अभी तक फिलहाल गेम में। द ओनली थिंग दे आर लैकिंग कि फाइनल थर्ड नहीं है उतना। मैडिसन हैज़ टू डू एवरीथिंग एंड ही स्टिल डूइंग इट। डाका, डिसेंट ट्राई। डाका अगेन, डोंट क्रॉस इट, डोंट क्रॉस इट, डोंट क्रॉस इट भाई, डोंट क्रॉस इट। नाइस, गुड ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई, टेक अ शॉट। चलेगा, डिफ्लेक्टिंग एंड स्पर्स विल ट्राई काउंटर अटैक। रिचार्लिसन, रिचार्लिसन भाई दो बंदों को कैसे ट्रिपल करेगा, एंड ही हैज़ फेल्ड एज ऑब्वियसली एवर्टन से लिया है भाई उसको। रिचार्लिसन भाई बहुत डिसेंट प्लेयर था, मतलब कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर था नहीं, और आज कॉन्टे ने सॉन को ड्रॉप करके रिचार्लिसन लिया है। समझ से बाहर है, बट मैं तो मैनेजर हूँ नहीं गाइड करने के लिए। सो वॉट एवर वर्क्स, वट कैन आई से ऑन दैट। बट लेस्टर as usual, as I said, they will play a high line and they are maintaining a high line. The defenders are on the halfway line and they are passing on it. So I mean, they really want goals by the way, Leicester, and the passing is just not working in the attacking side right now. But they are still looking strong to score the goal, and they have recovered quickly. Drewsby Hall, Madison. The shot has been blocked again, but recovered quickly by Leicester. I have to say, Leicester are recovering balls very quickly. Distributed into the flank. They can't cross the ball, they don't have Vardy in their team to take a header or anything. They don't even have Ian Nacho, the tall guy, the tall striker, the tallest striker they have in their squad. So they have Daka as a striker today, and I don't think Daka is the one, the heading ability guy, the Harry Kane type, the Erling Haaland type, the Cristiano Ronaldo type. So that's the Leicester's weakness today. They won't be able to deliver crosses on the attacking side, but I hope they do stitch some final third passing which would open up the game. Spurs are playing very dangerously on the backside. Predictions. So my predictions, the number one prediction I would say is Brendan Rodgers will lose the job tonight. That's my prediction. Otherwise, I would predict the score of 3-2 Tottenham Hotspur. Conte is very famous for nicking up results like this. He will play like defensive, and then counter attack suddenly. So that's how it works for Tottenham Hotspur, and I think it will work again today because they are looking defensively solid, and Leicester aren't able to pass on the final third. So it will be tough for Leicester to dig on a goal, but let's see what happens. What's your prediction, by the way, Vipul? We are missing Vipul on the live stream today, and he will be back on the second half if I'm not mistaken. Currently he's riding the most famous thing, the local trains of Mumbai.
Perisic with the corner. Headed on. A goal for Tottenham Hotspur. As I said, Brendan Rodgers will lose the job, man. He will lose the job. That's my prediction. Tottenham are 2-1 up after being 1-0 down inside 5 minutes, and in the 21st minute they are 2-1 up to Leicester City. Leicester are a disgrace. Leicester, man, what's wrong with them? What's wrong with Leicester City? Such an easy goal, man. Was it Harry Kane? No, it was Eric Dyer if I'm not mistaken. I think it's Eric Dyer. Great flick, great flick. Yeah, it's Eric Dyer, man. What a flick. Leicester all done on the corner again, and again another headed goal. So this shows Leicester doesn't have a heading ability, They have conceded in the corner again. Tottenham 2-1 up on Leicester City. As I said, Brendan Rodgers will lose the job. He's feeling the pressure right now. I'm just seeing on the television. He's feeling the pressure. I mean, I can see on his face he's too much nervous right now. He's too nervous. So I think he will lose his job. I think I've got the title correct down by. Why do I always indicate upwards? The title is always downwards. I forget that. So I think he will lose the job. Spurs are too good. Not Spurs. I think Conte is too good. Conte knows how to nick results. Conte and Jose are the only two managers in this world who will somehow nick a result, even if the match is not going on their favor. I remember the Chelsea versus Spurs, the Conte versus Tuchel fight that happened in that match. Chelsea was very good in that match. Chelsea deserve all 3 points, but that's what I am saying right now. Conte just somehow nicks the result to and defend. Zidane, Zidane. Nah, bro, you have to be crazy, Zidane. There is no way Zidane is coming to Leicester City, man. What is there to be achieved in Leicester City? What's Leicester history? I mean, they have won a Premier League and an FA Cup, but really, what's the history? I don't think Zidane would be available for this club. And already Zidane is just Zidane name around every club is just bullshit. He's never going to be involved in any of the club. He's just toying with every club. His name is always up there in the summer transfer window with Man United, with every other club. When Chelsea sacked Thomas Tuchel, again his name was up there. His name will always be up there, but he will never become a head manager of any club. I don't think so. Leicester trying to rotate the possession. That's a foul. I think so. No, that's not a foul. I thought that's a clear cut foul, by the way. Pot sure then he desperately needs a club. I think yes, Pochettino could be the one for Leicester City. Yes, I forgot that guy. Pochettino could be the one. Take a shot. Tillemans. Leicester are trying too much. Leicester are trying too much. They don't have to try this much, man. Just take a shot. Just see what happens. Test Lloris, man. They're not testing him. They're just trying too much outside the edge of the box. And yes, we pull on the question back. I think Pochettino, you don't have to convince Pochettino. Just give him the contract and he will sign it. There is nothing left to convince Pochettino. That guy didn't even win a league with PSG. Who in the world doesn't win the league with PSG, man? You don't have to train them to win the league, man. So I think Pochettino is the right man for Leicester City right now. And again a corner to Tottenham Hotspur, and previous two corner, both goals. Let's see what happens in the third corner. Goalkeeper is off the line anyway. I think he will try to jump and catch it when the corner is floated in. Let's see what happens. Kulusevski with the ball. It's Oh, it's a goal. It was a goal again, but disallowed by the referee.
This is crazy. 3 corners, 3 goals for Tottenham Hotspur. Spurs have absolutely bombarded the referee, man. They have circled the referee. Oh, that's a foul. That's a clear-cut foul. That's a foul. But what was the defender doing in the far post, man? That was NDD's fault, by the way. It would have been an own goal. If the goal would have stood, it was an NDD own goal. Man, Leicester are a bunch of jokers, man. They can't defend a corner, by the way. So all Tottenham needs to do in this whole game is just try to get a corner. And a goal is guaranteed, by the way. So Tottenham has recovered the ball again. It's 27 minutes into the game and Tottenham are 2-1 up on Leicester City and Brendan Rodgers to be sacked in the morning. Definitely. I think so. Leicester on the ball again with the Wilfred NDD who tried a cross and ball. It would have been a risky one. Nicely taken the position by Barnes. Drewsby Hall. They are trying too much. They are trying way too much. Tottenham just stitching the passes here and there. Okay. I think so it should work now. Yes, it's working now. So Daka is on. Daka! What a shit shot, man. So he was in this team for his pace and his ability, but he has zero pace, by the way. Man, he was so open. Should have just holded the ball and two runners were behind him. I think he would have easily converted the goal. That was a poor choice from Patson Daka. And Spurs are on the attack. Good try from Perisic. Perisic with his weak foot. Kane! Kane missed the ball completely. Nicely done, nicely done. Spurs are very good now on the ball. Sessegnon and it's another corner. Is Leicester's captain leaving the club? The reason for the howler. Yes, I think so. Maybe he predicted what's gonna be the outcome in this season. Maybe he was right. Maybe he saw something in the dressing room and he was like, nope, I don't, I will not be the part of this club right now. So Perisic with the corner again, and it's a corner. Let's see what happens. It would be so funny if this floats in, by the way. Ah, fuck's sake, man. Such a disappointing ball. The most happiest person in the stadium or in this Premier League watching right now would be me. Because 3 corners, 3 goals, one disallowed, and another goal would be such a joke, man. Leicester's defending is off the roof right now. Sorry guys, today the connection is not stable right now and it's just fluctuating, so that's why you would see some almost a goal for Leicester City right now. They are pressing very well, but their final third pass is not so good.
I'm sorry if you feel the stream so laggy, by the way. My connection is not good today. It has not been good today. So sorry if you feel laggy. The stream has been laggy. But Leicester trying to convert something, trying to be more positive. I mean, the game is still not over. You have to keep trying. And Madison is playing on the wrong position. I think so. Because on the right hand side, what can Madison do, man? You don't have a creative midfielder in the middle. Madison needs to play in the cam position or in the central midfield. In the right midfield, I don't think he can do much. Tottenham pressing aggressively, by the way, right now. Very aggressive. Spurs needs to play very quick if they nick the ball back from Leicester. Take a shot. Oh, man, fucking hell, man. Cross. Easily defended. Man. What are you doing, Shrewsbury Hall, man? Decent chance, by the way. He should have at least got on target that. It was difficult to take a shot, I would say that. And Son is on the bench. As I said, I am pretty much very shocked seeing him on the bench and Richarlison starting over him. Such a shame. Intercepted by Richarlison. Kane. So it would be a goal kick. Lloris has picked it up. Leicester currently are dominating position with the stats. Recovered by Leicester again. So Spurs are nowhere near the ball, man. But their both goal came from a cross, from a corner. Almost a goal for Leicester again. Leicester are trying. Leicester are trying. I have to give them. They need to keep trying, and I think they would somehow nick a goal if this continues. Leicester on the ball again. So Leicester are on the very high line, as I already said that, and they are recovering the ball very quickly. A cross in. Ooh, that was dangerous. Have a shot. He's offside. He's offside. Barnes was offside. The Barnes came from an offside position to take a shot, and he failed to convert it. I mean, Leicester City are trying, and I think they are very close to a goal, and I think eventually they will end up with a goal. So Spurs with the possession right now. Into as Richarlison are recovered again by Leicester City, as they have been doing in this whole match, recovering the ball every time. Nicely done by Ward. Great distribution skill. Leicester on the attack again. Decent vision from Madison. He almost picked up the left winger.
Recovered by Spurs. Recovered by Leicester again. Barnes. This is where they are trying too much, man. In the final third, just outside the penalty box, and recovered again. Take a shot. Take a shot. Take a shot. Take a shot. He did take a shot. NDD did took a shot, but it sailed over the bar. Yeah, too much power on that. Too much power. It sailed over the bar easily. So I mean, Spurs couldn't breathe in this game right now. In the 10-15 previous minutes, Spurs haven't holded the ball for more than a minute, if I'm not mistaken. And again, Leicester have recovered the ball, but Spurs have kept it somehow. Kane has switched it to Sessegnon perfectly, and Sessegnon driving towards the box and recovered again by Leicester City. As I said, Daka, he has to do something. Tillemans, Madison now in the midfield position. That's where he has to play, in the central midfield. James Justin, Barnes, take a shot. Madison. So Leicester are trying to rotate the ball casually. They're trying to take the Tottenham Hotspur player off guard, off their shape. So it's a patient build-up kind of way for Leicester City. They're building up very patiently. They're trying to convert through patience. Let's see what happens. Leicester. So we are closing in on the 40-minute mark, and Tottenham Hotspur are 2-1 up on Leicester City. From whatever has happened in this first 40 minutes, I would say that Leicester City didn't deserve that 2 goals to be conceded. And I mean, they were poor on the corners, but come on, man, Leicester was too good. Oh, what has just wrong-footed Harry Kane? That was so risky. Leicester on the ball again. Nicely done by Castagna. What? What? What the fuck did I just witness? What was that? What the fuck was that? What the fuck did I just witness, man? What a goal from Madison! What? Speechless. My goodness, that finish is so precise. That is so good to see, yaar. That goal right there is what Madison deserves, man. Madison should have started in that position, not on the right hand side. What a goal from James Madison. Great, great goal from James Madison, by the way. All square again. 2-2. And we kick off again. As I said, I see Tottenham Hotspur winning 3-2 this game. But let's see. Foul on Harry Kane. On Højbjerg, by the way. What a goal, James Madison. What a goal. That was a scorcher, by the way. What a goal. I just don't believe it. That's a foul. That's a foul, and that's a crossing area again. So you know what happens on the crosses, right? What has happened in the crosses? Leicester have conceded 2 goals through a cross.
So it's another chance, and this time it's gonna be Perisic to float in a ball. Let's see what's the possible outcome on this. Perisic! What the fuck am I witnessing today, man? What the fuck am I witnessing? This match is crazy good, man. Crazy. Crazy. Perisic floated in a ball, and I don't know who was the man who headed the ball, and it's a great save by Ward, who just fingertips it in towards the bar. Crazy. It was Davidson Sanchez, by the way, with the header. Ericsson floats in a beautiful cross in towards the far post, and Davidson Sanchez with a perfect connection on the header, and it's just the save Ward needed to make. It was enough, and it just flicks onto the crossbar and went in the play again. Almost, Leicester almost conceded another goal from a set piece, man. Leicester needs to be very careful. So they have recovered the ball again. So Madison tried a curler on the far post. He tried to place it rather than use a power through it. He tried to just curve it. He tried to just place it in the far post, and it failed. But good try, Leicester. I mean, Leicester are playing very good. Maybe the title that I have decided that could go wrong. Leicester on the ball. Lloris running to recover it. Lloris will have to clear it. He does. Recovered by Leicester. And Spurs on the ball again. Cleared away by Leicester. Nicely done. Daka. Man, Leicester are too aggressive. Leicester are too aggressive in this game. Tottenham can't breathe. Tottenham can't breathe. So 2 minutes of added time, and we are on to the first additional minute. Leicester will try one final thing. So the last minute of added time. We are into the 47th minute. Leicester were very good. Leicester were very good in this half. Handball. Leicester, take a shot, take a shot. Oh, almost another goal. Great save by Lloris. Great save by Lloris. Madison has suddenly come into the life in this game, man. Yes. I mean, it's not his mistake. He has to take a shot. It's a good shot as well. It's a great save by Hugo Lloris. So I think that would be first half. When this is kicked off, this ball. Just kick it off. Yes.
That's the half. So what a first half we have witnessed, man. Tottenham 2, Leicester 2. Kane and Dyer with the goal for Tottenham, and Madison and Tillemans with the goal. Tillemans with the penalty. But what a strike by James Madison. That was absolutely inch perfect, man. I really loved it. Great. Great from James Madison. Maybe Brendan Rodgers' job could be, just saved today. This is something special from Leicester City, by the way. As I already said, it would be an end-to-end game, and it is an end-to-end game. By the way, Football World Cup is very close, and you guys would know that. Let's see, by the way, what happens in the second half. I have I have predicted 3-2, 3-2 to Tottenham Hotspur. But seeing what Leicester are doing right now, it's gonna be a crazy game, man. I still think the second half would be an end-to-end game. I think Conte will try to, Conte will try to just take a breath and rearrange his team, tell his team to calm the play, take more possession of the ball, and literally just calm out the attack of Leicester City, because Leicester City are currently dominating Tottenham Hotspur in their own box. Not even the game, in their own box. I have seen very less football in the Leicester City box. All the football have been in the Spurs box, as I already predicted. But I think Conte would be furious with his players, and Conte will try to kill the game in the second half. He will try some things which Leicester, which will take, which Leicester would, which they wouldn't like, and I think Leicester will struggle in second half. I think Conte would do his some masterclass, some witchcraft, and Leicester wouldn't like that. So let's see what happens in the second half. Just throw in your prediction. Whoever is watching, or whoever just visits the channel, just throw in your prediction, and I would be able to know what you guys think of the match as well. So
It would be a good conversation, you know, cause at the halftime I feel very lonely, man. Who wants to hear this? Pundits sitting on the desk. But yes. So analysis right now. Penalty incident. Yeah, it was a penalty, by the way. I have to say that it was a penalty. It was a clear-cut penalty. The only question was it outside the box or inside the box? And as you know, it stood, so it was inside the box. It was on the line, by the way, and the line belongs to the referee. And currently they are zooming in to the point of contact, and the point of contact is on the penalty line. Yes, the point of contact is right on the penalty line, penalty box line. So I think that's deserved. But what happened after was was the one to look for, man. Laurie saved the penalty, but he was off his line. So that's what they are showing right now. Tillemans took it to Laurie's right hand side, and Laurie saved it, but he was off his line by this much. So it was a correct decision again, and Loris was told the penalty is gonna be retaken. Goalkeeper encroachment, and Tillemans took the penalty again, and he went to the right side again, and this time he scored cause the power and the placement was enough for to beat Loris, and Brandon Rodgers was super happy. But what a crazy half, man. Talk about that half. That half was so crazy in my opinion. And I have to talk about this, man. Spurs have scored both of their goals through a cross. Kane on the end of it. So Perisic was trying to block the view of the goalkeeper, and suddenly he made a run and helped Kulusevski, who just so much empty space for Harry Kane, by the way. Look how much space that was open behind the defender. So Harry Kane, as we know, he's such a master of his own game, man. He understands the game more than anyone ever could currently on the striker position. He's one of the best up there. So he saw the space, and why not? He attacked it and he got the goal. Kulusevski too, I have to appreciate Kulusevski. His pass was inch perfect for Harry Kane. So again another goal, the Dyer goal. From the corner again. That's so crazy, man. And that's what they're showing. Dyer was hiding behind the defender. It's so crazy when you see it back again and again, and look at the space again. There is no player on the far post. Usually there is one or two players on the far post trying to defend the balls like this, and this time there was no one. And as we know, 2-1 to Tottenham Hotspur against Leicester City. So Leicester have conceded 25 set piece goals since August 2021. I thought Manchester United were the only team who were so bad on the set piece, but Leicester are very trash on the set piece, by the way. And what a goal from Maddison! This I have to appreciate that. What a goal from Maddison, man! Such a lovely goal, inch perfect, perfect placement on the far post. Great goal from Maddison. He saw the space, he saw the goalkeeper, and he was like, I will just place it on the far post. Thank you very much. Easy goal for James Maddison. Lovely goal from Maddison. Let's see what happens in the second half. Lovely goal from Maddison. Let's see what happens in the second half.
And have you guys heard about that news? Mason Greenwood is back. I'm saying it again and again. I think Mason Greenwood is back in the Manchester United squad. So that's another thing to look for. Just a second, guys. I will be right back. Sorry. ओ भाई, ये तो गजब है. बायर्न म्यूनिख हैव लॉस्ट. ये कौन सी टीम है, गॉड नोज. ऑक्सबर्ग. यस, ऑक्सबर्ग ने बायर्न म्यूनिख को हरा दिया. अरे रे रे रे. एंड उसके ऊपर जले पे नमक ये कि बोरुसिया डॉर्टमंड हैव वन इन द लास्ट 10 मिनट्स. वो भी 1-0 जीते हैं शाल्का से. एंड ऑक्सबर्ग 1-0 जीत गया अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. शॉकिंग रिजल्ट. गजब है यार, कुछ भी होता रहता है. आई मीन बड़ा ही डिफरेंट है ये सब चीज़ें. गाइस आई विल बी बैक. मेरा डिनर टाइम हो गया है, बट सेकेंड हाफ भी स्टार्ट हो गया है. आप लोग पता है सिर्फ 10 मिनट पहले आए होते ना, मैं अच्छे से खा लेता. 10 मिनट पहले आते तो अभी सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है. चलो जाने दो, मेरे पे हाई और क्या. ट्रेन में मैं बैठे रहा हूँ, बंद रहेगा तब तक वो ऐसे ही प्ले होगा. वो पता है मेरा, वो प्ले होते रहता है, देखता हो. हाँ, वो प्ले होगा तो ये भी हो ही जाएगा. इसको चालू रखता हूँ, तब तक लोग इसी को देखेंगे जो भी आएगा.
तूने चालू करके रखा है स्ट्रीम?
सो भाई आई एम बैक। बट यार ये मैच को क्या हो गया, जो मैंने पहले ही बोला था 3-2। गुड सेव बाय लॉरीज। से कभी गोल जाना नहीं चाहिए था, बट चलो भाई, सब वॉइस वॉइस सब सही है। इनके सब लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ गया था, तो भाई मैं डिनर करने गया था अभी। बट यार एनडीडी सो रहा था क्या गोल के लिए? क्या किया भाई एनडीडी ने? सो रहा था पूरा। जो लेस्टर कर रही है ना अभी, वही चीज़ स्पर्स कर रही थी उनके साथ फर्स्ट हाफ में। स्पर्स, मैं बोला था पहले कि कॉन्टे कुछ तो भर देगा इनके कान में कि ये कुछ अलग ही खेलने लगेंगे भाई। बट यू नो स्टिल ये गेम बहुत वाइड ओपन है। डाका डिस्ग्रेस है भाई, डाका को निकालो भाई, डाका इज़ अ डिस्ग्रेस। यार ये बंदा कैसे वार्डी के ऊपर स्टार्ट किया यार। भाई बंदा वॉलीबॉल खेल रहा है ऐसा लग रहा है। येलो कार्ड दिया उसको रेफ ने। मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड लग रहा था उधर, एकदम वो वाला मोमेंट रिपीट हो गया था। लॉरिस ने अपना काम किया यार। लॉरिस आई मीन जो दोनों गोल खाया था उसमें उसने ट्राई किया अच्छा, लेकिन सेवेबल नहीं था। टिलेमेंस का पेनल्टी इंच परफेक्ट, और मैडिसन का क्या गोल था यार। मेरे को मेरा रिएक्शन देखना है, मेरा रिएक्शन क्रेजी था उस गोल पे। लेस्टर फिर से आई इन 15 मिनट्स के बाद वो पोजीशन उन्होंने पकड़ा जो उन्होंने पहले पकड़ा था। फाइनली 15 मिनट बाद उन्होंने पोजीशन पकड़ा यार। फाउल ना, रेफरी डिक्लाइंस इट बोल रहा है भाई, एक्टिंग कर रहा है। बढ़िया। रिकवर्ड बाय लेस्टर, दैट्स अ फाउल श्योरली। तो ये फाउल मिला भाई इनको। कुछ कर तो नहीं पाएंगे क्योंकि जो हेडिंग में जो सामने वाली टीम है टॉटनहम हॉटस्पर, दे आर मच मोर एक्यूरेट ऑन हेडर्स। तो लेस्टर मेरे को नहीं लगता कि हेडिंग से कुछ कर पाएगी। आई मीन अगर आप यहाँ एज ऑफ द बॉक्स तक पास दे के कुछ कर पाओ तो ठीक है। मे बी मैडिसन को एकदम फार पोस्ट पे ज़ोर से विप करना चाहिए बॉल। बहुत ज़्यादा दूर है विप करने के लिए। वो आयक्स और रियल मैड्रिड वाला गोल अगर याद होगा तो उस टाइप की चीज़ है ये, जो शौना ने मारा था उस पे, कोटुआ पे। शायद उससे भी ज़्यादा टाइट एंगल है। जो मैंने बोला वही किया उसने, एज ऑफ द बॉक्स। यही मैंने बोला था, यही कर सकते हैं लोग। डायरेक्ट क्रॉस डालेगा तो पक्का बॉल जाएगा, तो उससे अच्छा एज ऑफ द बॉक्स तक खेलो और वहाँ से कुछ ट्राई करो। बहुत अच्छा खेले थे बाय द वे लेस्टर। ये जो डाका का चांस मैं अभी भी देखा हेडर का, आई थिंक वार्डी होता ना यार तो 2 या 3 गोल तो ये जो अभी खेल रहे हैं लोग, इस चीज़ से 2 या 3 गोल तो वो कन्वर्ट कर ही लेता वार्डी यार। अरे व्हाट अ टैकल, ग्रेट टैकल भाई। फोकट एक्टिंग कर रहा है वो। कंटिन्यू द प्ले, फक हिम अप यार। कुछ हुआ नहीं है भाई, मतलब पोजीशन जाता है तो कैसा अपना शेप भी हिल जाता है ना इनका, तो ये लोग को डर लगता है। अभी कुछ नहीं होगा, अभी उड़ जाएगा, ये हो गया। ठीक है यार, मतलब ऐसा लगता है भाई बदन इनका 200 किलो का है कि गिर गए तो भाई टूट गया सब कुछ।
वही वो भी बोल रहा है बंदा, डिफेंडर भी वही क्लेम कर रहा है कि भाई हुआ कुछ नहीं है, बस इसको रोना धोना है। पोजीशन चला गया भाई बंदे की। नाइस डिस्ट्रीब्यूशन डाका। अरे रे रे रे। लेस्टर ऑन द पोजीशन अगेन। मैडिसन को मिडिल में आना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। मैडिसन उस साइड से कुछ नहीं कर पाएगा। जस्टिन बांस। जस्टिन लेस्टर ऑन द अटैक बाय द वे। स्पर्स वर ऑन द अटैक। भाई मैं स्पर्स को आज पूरा दिन लेस्टर बोला हूँ, पूरा दिन। अभी गेम एकदम ठंडा पड़ गया है, मुझे नहीं पता क्यों। अगर ये ऐसे ही रहा ना, देयर इज़ अ 100% थिंग कि ब्रेंडन रॉजर्स विल गेट सैक्ड। 100%। नाइस फ्लिक। बार्न्स इज ऑन। हावी बार्न्स। दैट्स अ गुड टैकल। इंडी इंडी रिकवरी। बढ़िया। क्रॉस क्यों दिया भाई? कोई नहीं है तुम्हारे पास? किसको क्रॉस दिया तूने? कोई नहीं है तुम्हारे पास हेडर जीतने के लिए। लेस्टर हैंडबॉल के लिए, मैडिसन हैंडबॉल के लिए अपील कर रहा है भाई, बाय द वे। फर्स्ट कॉर्नर फॉर लेस्टर सिटी इन दिस गेम। मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा इनका हेडर से। ये लोग अच्छी टीम नहीं है यार, मतलब सिर्फ जॉनी एवेंस है जो हेडर से कुछ कर सकता है। आई थिंक सो। और वो बंदा बराबर लॉरीज के बाजू में खड़ा है, तो वो क्या ही करेगा अब। किसी को जाके नियर पे लेना चाहिए बॉल शॉर्ट कॉर्नर खेलने के लिए। क्या एक तो बंदे है नहीं हेडर के लिए, दूसरा तू क्रॉस बराबर नहीं डाल रहा है। और भाई ये लोग डिजास्टर है, पता है। मैं यूनाइटेड को समझता था कि भाई कॉर्नर्स में हमारे गोल्स नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। या भाई लेस्टर तो उससे भी बड़ा डिजास्टर है भाई, बॉल ही नहीं जा रहे तो भाई हेडर कैसे मारोगे? बाहर है। थ्रो इन फॉर स्पर्स। 67 मिनट्स हो गए गेम के, बाय द वे। नाइसली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय केन। ओ, पता नहीं यार, सॉन तो भाई गेम में दिख ही नहीं रहा है। सॉन ऐसे ही गायब रहता है, आई मीन।
नाइसली रिकवर्ड, गुड ट्राई। यार वाडी है कि नहीं इनके पास बेंच पे? क्रॉस इन, फाइनली हेडर जीता इन्होंने, लेकिन एज एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी तो बहुत वीक होने वाली है उसकी। वाडी है कि नहीं भाई इनके पास? सो बिसुमा भाई फाइनली आते हुए, बिसुमा को तो भाव ही नहीं मिल रहा है इस टीम में। भाई वाडी है बेंच पे। भाई कहाँ क्या कर रहा है ब्रेंडन? वाडी को लेके आ भाई, वाडी लेके आ, पेरिस लेके आ, ऑल ब्राइटन लेके आ भाई। अच्छे अच्छे प्लेयर्स तो बेंच पे है। ये टीम डिजास्टर में कन्वर्ट हो चुकी है भाई। स्पर्स एंड लेस्टर। लेस्टर भाई, स्पर्स में आज इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? लेस्टर सिटी डिजास्टर हो गया है इस वक्त। फाउल, फाउल प्ले टू टॉटनहम हॉटस्पर। 20 मिनट्स प्लस एडेड ऑन है, एडेड टाइम 20 मिनट्स प्लस एडेड टाइम फॉर लेस्टर सिटी। लेस्टर सिटी भाई, लेस्टर सिटी टू गेट सम रिजल्ट, मे बी सेव ब्रेंडन रॉजर्स जॉब। मुझे लग रहा है ही विल गेट सैक्ड। क्वीन मैजेस्टी के लिए अभी ओवेशन, क्लैपिंग चल रही है वैसे। उनके राज में 70 इयर्स उन्होंने रूल किया था, इसके लिए 70 मिनट्स पे क्लैप करते। लेस्टर विद द फाउल प्ले। बहुत प्रेस हो रहे हैं लेस्टर सिटी, बाय द वे बहुत प्रेस किया जा रहा है। स्पर्स सेकेंड हाफ में बहुत इंप्रूव टीम बन के आई है एंड कॉन्टे वुड बी इम्प्रेस्ड। और वापस प्रेस करके बॉल जीता हाई ऑफ द लाइन एंड लेस्टर ने काउंटर प्रेस कर दिया एंड कॉन्टे इज फ्यूरियस ऑन द टच लाइन। Nicely recovered. Heung-min Son. Redemption time. Redemption time. Son! अरे भाई, मैंने इसको एफपीएल टीम से निकाला था। What a joke. Absolute screamer भाई, screamer. Wow, Son, wow. भाई व्हाट अ स्क्रीमर फ्रॉम सॉन यार। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली हर्ष, व्हाट अ गोल। भाई इस गेम में दो कड़क गोल देखा, बट आई थिंक ये सबसे बेस्ट गोल था।
एंड सॉन अपना आइकॉनिक सेलिब्रेशन। सॉन भाई पिस्ड ऑफ दिख रहा है, स्माइल नहीं कर रहा है वो बहुत उदास है वैसे। एंड दैट्स गेम डेड एंड आई थिंक दैट्स ब्रेंडन रॉजर्स गॉन। दैट्स गेम डेड, ब्रेंडन रॉजर्स इज गॉन 100%। व्हाट अ गोल बाय द वे भाई, अनबिलीवेबल। बढ़िया भाई बढ़िया, क्या गोल था यार। क्रैकी भाई, अनबिलीवेबल गोल। That's inch perfect man. That's so good. Conte is so happy. भाई अब तू खुश नहीं होगा लेकिन। सॉन को कैसे बेंच कर दिया तूने भाई, उस बंदे को उदास कर दिया। जो बंदा हमेशा स्माइल करता था वो उदास हो गया है अभी। और फ्यूरियस दिख रहा है उसके फेस में ना, कुछ अजीब सा गुस्सा है। वो फ्यूरियस है। Son is finally on the score sheet. 1 millimeter away and it would have hit the post. नहीं इतना भी एक्यूरेट नहीं था वो गोल, लेकिन हाँ वो क्लोज था, बहुत अच्छा था लेकिन गोल। मीनवाइल लेस्टर, बार्न्स, पोजीशन गॉन। व्हाट अ गोल भाई सॉन यार भाई, शब्द नहीं है मुंह में उस गोल को डिस्क्राइब करने के लिए यार। सॉन इज टू गुड सॉन। I think Vardy is on the pitch. Yes, Vardy is on the pitch by the way. Tottenham has recovered the ball again. Kane trying to look for Son. भाई केन बहुत स्मार्ट प्लेयर है, केन को धोखा नहीं दे सकते। व्हाट इज द स्कोर भाई, देख ले ऊपर 3-2। यहाँ 3-2, 4-2 आई मीन। मैं अब तक 3 में अपना प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, 4-2 इज द स्कोर। हाय, इट्स क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी क्या गेम। मैंने पहले ही, अगर आप लोग ना वीडियो एकदम स्टार्ट में लेके जाओ और वहाँ देखो मैंने प्रेडिक्ट क्या किया था, मैंने क्या बोला था ये गेम। मैंने बोला था ये गेम एंड टू एंड होगा। लोग ट्विटर पे और यूट्यूब पे बोल रहे थे कि ये गेम बोलते हैं ना, बहुत बोरिंग होने वाला है, मिडफील्ड बैटल होगा। बट मैंने पहले ही बोला था, जैसे लेस्टर मेरे को लाइनअप होते हुए दिखी और जैसे स्पर्स लाइनअप होते हुए दिख रही है ना, मुझे फील हो रहा है ये एक एंड टू एंड गेम होने वाला है। लेस्टर उस साइड से अटैक करेगा एंड Spurs will be dangerous on counter attack. And Son, what a goal यार, unbelievable। Son भाई आग लगा दिया बंदे ने। मैंने अभी FPL टीम से निकाला उसको and he has finally scored a goal। ये तो बदकिस्मती भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती भाई। Son is again, अरे Son, ओ टच गंदा ले लिया बंदे ने, अदरवाइज ही वुड हैव बीन इन। 1-on-1 था बंदा। सॉन इज ऑन अगेन, मेरे को लगता है आज हैट्रिक मार के ही छोड़ेगा ये बंदा। अदा मतलब हमने यूजुअली देखा है कि सॉन जब गोल मारता है तो एक स्माइल रहता है उसके फेस पे, भाई एकदम फ्यूरियस है वो आज। कुछ पता नहीं इसको ऐसा क्या गुस्सा है, मुझे लगता है वो बेंच हो गया या उसको कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई है ना जिसका फ्रस्ट्रेशन वो उतारा है उसने उस गोल में। व्हाट अ गोल यार, लीथल। 75 minutes have passed on this game and 4-2 is the score for Tottenham Hotspur। अब तो गोल स्कोरर्स भी याद नहीं है मुझे। आई थिंक केन, सॉन, डायर एंड बेंटेनकर, ये 4 स्पर्स के गोल स्कोरर है एंड टिलेमंस पेनल्टी एंड मैडिसन का गोल। सो दैट्स 2 फ्रॉम लेस्टर सिटी। मैडिसन और सॉन का गोल देखने लायक है यार। मैडिसन का भी गोल बहुत अच्छा था, दोनों का ही गोल बहुत अच्छा था, बट आई वुड गिव इंच इंच मोर टू सॉन। सॉन का गोल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था यार, सॉन वॉज टू एक्यूरेट विद हिज फिनिश। सो लेस्टर आर करंटली अटैकिंग। आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स इज गॉन। ब्रेंडन रॉजर्स का ये फाइनल गेम था। बाय बाय ब्रेंडन रॉजर्स। मुझे लगता है कि मैंने टाइटल गलत नहीं डाला। मीनवाइल लेस्टर मिस्ड अ चांस। एनडीडी वाइड। जो टाइटल लिखा है ना भाई
बहुत सही टाइटल लिखा है, ब्रेंडन रॉजर्स लास्ट गेम। बढ़िया है। मैडिसन को अभी भी वो गाइड कर रहा है। भाई गाइड करने के लिए अब तेरे पास कुछ नहीं है, घर जा और गाइड कर। इस गेम ओवर फॉर यू। कॉन्टे ने सैक करवा दिया आखिरकार इसको। चलो, बढ़िया ही है। देखते हैं लेस्टर नेक्स्ट मैनेजर किसको ट्राई करता है। मुझे तो लगता है ही इज़ गॉन भाई। इसके बाद भी अगर लेस्टर उसको बैक करती है दैन भाई, बॉल्स ऑफ स्टील टू लेस्टर ओनर। हैरी केन रनिंग द शो। हैरी केन। Everything is happening in this match भाई, everything is happening. Spurs was this close to score the fifth goal. Great save by Ward, लेकिन rebound पे गोल जाने का पूरा chances था, but what a save. हैरी केन ने बॉल डाला था फॉर सॉन। बेंटेनकर कलेक्ट्स इट, डिसेंट शॉट, अच्छा सेव, बट रिबाउंड पे डिफेंडर का क्लियर करना ज़रूरी था, नहीं तो सेसेन्योंग पीछे ही था भाई। ज़ोरदार शॉट मारता, गोल सीधा। सॉन बहुत हंगरी दिख रहा है। हाँ, सॉन इज़ आई मीन एवरीवेयर। वो पोजीशंस कवर कर रहा है, वो बॉल पे आने को देख रहा है, ट्रैक बैक कर रहा है। उसको बॉल चाहिए, उसको गोल चाहिए। अगेन सॉन इज़ ऑन द रन। केन फाइन सॉन। सॉन, अरे भाई ओपन चांस मिस कर दिया क्रिश्चियन रोमेरो। अच्छा ऑफ साइड था भाई, ऑफ साइड था तो बच गया। ओपन चांस मिस कर दिया क्रिश्चियन रोमेरो। सॉन वुड हैव, सॉन भाई एक गोल और एक असिस्ट दे चुका होता ये गेम में। हाँ सॉन ऑफ था, इतना ऑफ था सॉन। बट व्हाट अ बॉल बाय सॉन यार। भाई रोमेरो मिस कैसे कर गया था इतना बड़ा ओपन गोल, और भाई पूरा गोल मिस कर गया रोमेरो। कॉन्टे फ्यूरियस है, कॉन्टे उसको बोल रहा है भाई पीछे जा वापस। दिस गेम इज क्रेजी भाई, स्पर्स ऑल ओवर है, मतलब फैंस एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि गोल्स तो उनके मस्त आ रहे। लेस्टर अनलक्की, फर्स्ट हाफ में चांसेस थे लेने को, अटैक अच्छे बन रहे थे, प्ले अच्छा था, फेल टू कैपिटलाइज। मैडिसन, स्टिल मुझे लगता है ड्रॉ पॉसिबल है इफ सम हाउ लेस्टर निक्स अ गोल बिफोर 85th मिनट। स्टिल, स्टिल क्योंकि फिर बचा हुआ टाइम एंड एडेड टाइम वुड बी इंटरेस्टिंग। Spurs recovered, counter attack again. केन इधर है एंड सॉन, सॉन बॉल मांग रहा है। केन बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए, सॉन बॉल मांग रहा था भाई पूरा टाइम।
लिटरली टॉय कर रहे हैं, अब तो कुछ नहीं रह गया। बट स्टिल लेस्टर शुडंट गिव अप भाई, उन लोगों को प्रेस करना चाहिए, और अभी भी अगर गोल आ पाया ना समहाउ दे कुड डू थिंग्स। व्हाट भाई, सॉन क्रेजी हो गया, सॉन क्रेजी हो गया, सॉन ने शुश कर दिया है भाई। भाई सॉन इज क्रेजी। भाई मैंने उसको एफपीएल टीम से निकाला था, पता है क्यों? मुझे लगा था वो परफॉर्म नहीं करेगा, उसका गेम ओवर हो गया है। मुझे एक एडवाइस आई थी कि प्लीज़ उसको एफपीएल से मत निकालना, जिस दिन तू निकालेगा ना उस दिन वो गोल्स मारेगा। सॉन हैज गॉन एब्सोल्यूट क्रेजी भाई। फर्स्ट द फकिंग राइट फुट और अभी द लेफ्ट फुट। व्हाट? आई कांट बिलीव इट व्हाट आई एम जस्ट विटनेसिंग मैन। फक सेक। वाओ। व्हाट द हेल। कॉन्टे भाई, कॉन्टे कॉन्टे कॉन्टे। भाई भाई भाई, Son is absolutely crazy. What a player, Son. What a player. I just regret it because I have removed him from my FPL team yesterday. And I'm still regretting it right now. भाई एक गोल राइट फुट से, एक गोल लेफ्ट फुट से, दोनों टॉप कॉर्नर। और अभी वो हैट्रिक के लिए, एंड सॉन इज हियर अगेन। सॉन भाई, सॉन हैज गॉन एब्सोल्यूट बॉन्कर्स भाई। स्टॉप हिम इफ यू कैन। गुड लक लेस्टर डिफेंडर्स भाई, गुड लक भाई। ही वाज ऑन। सबसे पहली बात, थोड़ा रुका के मारा होता ना, बैंग ब्रो। सॉन इज क्रेजी टुडे। Leicester, Brendan Rodgers will be sacked in the morning. Sacked in the morning. He will be sacked in the morning. Spurs with the ball again. Son run bana. Son, 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 Son. Son with the run again. Oh. Shit. Son scored a hat-trick, but it was offside. Let's see, let's see, let's see, let's see. Let's see, let's see, let's see. अरे भाई, क्लोज है, मुझे लग रहा है बहुत क्लोज है, मुझे लग रहा है बहुत क्लोज है सॉन। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लोज है। वीआर, आई थिंक इज ऑन साइड। आई थिंक इज ऑन साइड। आई थिंक इज ऑन साइड। I think he is on side. I think it is on side. On side. Hat trick for Yu Ming Son. But what have I witnessed, man? Clip this, Vipul. Vipul, clip this. Firstly, Son was not on the bench. Everyone was like, well done, great decision. Son is not on the bench.
And when he came on from the bench, the guy scored 3 goals. Just listen to me carefully. 3 fucking goals. The hat trick when he was subbed on in the 60th minute, around 60th minute. One with the right footed screamer, top corner. One with his weak foot, the left foot, screamer on the top corner of the other side. The third one, a great run, perfectly timed run, and beautiful finish. Hat trick within 20 minutes. 20 minutes or so. Son has gone absolute bonkers, man. Absolute crazy. The thing I'm fuming, there is. I'm so happy for Son. By the way, there is only one thing that's inside me, which is fuming right now, is that I kept him in my fantasy team for a very long time, and just in this match day, I substituted him. I took him out. I substituted him. That's the only thing I'm fuming with. But I'm so happy for Huming Son, man. That guy deserved this result. That guy deserved what he has done in this match. 20 minutes or so, and he has scored a hat trick. Beautiful, lovely Son, excellent, crazy, crazy Yoonmin Son, crazy, क्रेजी भाई, क्रेजी 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 भाई। मेरे पास शब्द नहीं है अभी आगे बोलने को। मैं स्ट्रीम में शांत हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कोई बोले ना कि स्ट्रीम में शांति हो गया भाई। मैं डिसबिलीफ में बैठा हूँ, मैंने सॉन को फैंटेसी से निकाल दिया, लिटरली डिसबिलीफ में हूँ मैं। मैंने पहले ही कहा था, मैंने क्या कहा था कि सॉन इज लुकिंग वेरी हंग्री। सॉन ने जब वो एक गोल मारा ना, उसके बाद लुक एट हिज रन्स, लुक एट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू अचीव। ही वाज रनिंग बिटवीन द लाइंस, ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। स्पर्स की बाकी की टीम प्लेयर्स वे लाइक, हो गया, इट्स ओके, वी हैव वन। But Son was like, no man, I need more goals. Unbelievable. Son is in again. Son is in again. Son. Ah, unlucky, unlucky. By the way, let me just remind you with the score right now. It's the 91st minute of the game and the score is 6-2. 6-2 to Tottenham Hotspur. This second half started with a score of 2-2. And now it's 6 goals to 2. Definitely now Brendan Rodgers is gone, finished. Finished. Brendan Rodgers is finished. He's gone. Even if the owner backs him up, I don't know what the owner is thinking or what the sporting director is thinking. Whoever backs him up, I don't know what they are thinking, man. Because Brendan Rodgers is done with this team. How the hell did he bench Vardy in the most important game? They haven't won a single game in 7 games now. It's a disaster for Leicester City right now. But Son, man, Son. Incredible. What a player. What a player Heung-min Son. Son for Ballon d'Or. Ah, bhai. Just toying. Tottenham Hotspur team are just toying with the Leicester City players. You know, Son is still looking for another goal. He's still making those runs. He's still making those in-between line runs. He still wants more goals, man. Son is crazy in this game, man. This is the real Heung-min Son we know as a fan, as a football fans.
This is the only Heung-min Son we know, not the Son that we saw in previous 6 games and the Champions League games. This is the only Heung-min Son that I know, that you as a football fan know. Conte's first season. Is this Conte's first full season? Yes, I have seen this fact. Conte's first season is a Premier League winning season. Wherever he has ooh, wherever Conte has managed his first season have won the title for that league. Whether it's Premier League, whether it's the Serie A, he has won the title. And Spurs are currently on the second number in the Premier League right now after this match. And City are on 17 points after 7 games, and Spurs are 2 on 17 points after 7 games. The only difference is the goal difference. Let me just remind you. So yes, the goal difference is of 6 goals, and Man City exists. They do, they do. They do, but I've forgotten it today, man. Son with a hat trick in how much minutes? 13 minutes, भाई. 13 मिनट्स में हैट्रिक मार दिया बंदे ने. भाई काट के चला गया सबका. 13 मिनट्स हैट्रिक मतलब क्या है भाई? क्या है भाई, क्या है? जो की है और कुछ नहीं. विपुल अगर ज्वाइन करना है तो इसमें ज्वाइन कर ले. लेट्स डिस्कस अबाउट द गेम हियर. आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट द गेम हियर. कम हियर, कम हियर, कम हियर. लेट्स डिस्कस अबाउट द गेम हियर. आ जा इधर आ रहा है अभी. आ रहा है तो बता दे. आई विल शेयर द लिंक. हाँ, देन आई एम शेयरिंग द लिंक. उसमें आ जा एंड लेट्स सेट अप. हैंग ऑन गाइस, मुझे सब बंद करना पड़ेगा फॉर अ सेकेंड. हाँ, रुक रुक रुक, सेटल कर रहा हूँ. अरे टीवी. टीवी इन द बैकग्राउंड.
माइक अनम्यूट, हाँ। आई थिंक हम लोग ऑडिबल है और वगैरह वगैरह। भाई क्या क्रेजी हेलो। मैच था। यस। भाई क्या चल रहा है अनबिलीवेबल भाई? भाई। स्पर्स अपने बोलते हैं ना बेस्ट फॉर्म में दिख रहा है। बेस्ट फॉर्म? भाई बेस्ट फॉर्म नहीं। तू तब तक बात कर, मैं टाइटल एडिट करता हूँ। भाई टाइटल को देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ब्रेंडन रॉजर्स लास्ट गेम क्वेश्चन मार्क नहीं, ब्रेंडन रॉजर्स लास्ट गेम। लास्ट। ब्रेंडन रॉजर्स सैक्ड, वेट, ब्रेंडन रॉजर्स सैक्ड, सॉन हैट्रिक। इट्स क्रेजी मैन। जो मैंने देखा ना भाई, मेरे रिएक्शंस देखने लायक है यार। स्पर्स तो फॉर्म में है, लेकिन लेस्टर को क्या हो गया अचानक? लेस्टर भाई डेड है। डेड हो गई है भाई। उन्होंने साइन भी नहीं किए ना प्लेयर्स ये सीजन कोई भी। किसने? लेस्टर ने एक भी प्लेयर साइन नहीं किया आई गेस। ना, लेस्टर ने शायद एक दो साइन किए इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। कोई तो एक टीम थी जो साइन, हाँ वुल्व्स थी जो साइन कर ही नहीं रही थी पूरा सीजन, एंड इन दी एंड कोस्टा लिया एंड कोई और प्लेयर भी लिया उन्होंने। हाँ, वुल्स वुल्स थी, वुल्स थी, वुल्स थी। वुल्व्स थी वैसी टीम। हम्म। ओके। लेस्टर ने ये सीजन एक सेंटर बैक लिया यंग। हाँ देन वुड फेज, FAES, हाँ अगर तेरे को पता रहेगा। देन हाँ, वही वही आज खेल रहा मिड, था, वही बंदा खेल रहा था आज। देन एक गोलकीपर लिया ऑफ कोर्स माइकल का रिप्लेसमेंट। एक मिडफील्डर भी लिया, पैरेट, यस आई डेनिस नो हिम। पैरेट। और हमजा चौधरी आई गेस हमजा उसने। चौधरी तो पहले से ही था। हमजा चौधरी, हमजा चौधरी ने छोड़ा क्लब आई गेस। तो छोड़ दिया। हाँ, लोन पे गया हमजा चौधरी। मुझे नहीं पता ना यार। एंड डेनिस पैरेट ने भी टोरिनो ज्वाइन किया लोन पे। अच्छा। सो लेस्टर ने सिर्फ दो साइनिंग्स की, हाँ। एक सेंटर बैक एंड अ गोलकीपर। ओके। दैट्स इट, दैट्स इट। इसीलिए वो सैक होगा भाई, सैक्ड इन द मॉर्निंग। he is fucking sacked in the morning. एंड ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, almost 6 players departed from the club. I think that's the updated title and that should be it. That should be it guys. मुझे लगता है उसका काम तमाम हो गया, ही इज़ डन। टॉक अबाउट द मैच टुडे यार विपुल भाई, क्रेजी क्रेजी, व्हाट अ मैच। भाई तू तो था ही नहीं, तू तो ऑफिस में और ट्रेन में लग गया भाई, लेकिन द मैच आई विटनेस्ड भाई। मतलब पता है, गजब मैच था यार। स्टार्टिंग से ही ना मैंने लाइनअप देख के बोल दिया था, मैंने बहुत ट्विटर पंडिट्स एंड वगैरह ये सब को देखा, तो वो लोग बोल रहे थे हाँ कि इट्स गोना बी अ मिडफील्ड बैटल, वन ऑफ दोस बोरिंग गेम्स वगैरह वगैरह। हाँ बट मेरे को पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और मैंने कहा था कि दिस वुड बी एन एंड टू एंड गेम, मे बी अ हाई स्कोरिंग गेम। और मैंने ये बोला था कि लेस्टर विल प्ले अटैकिंग, टॉटनहम विल प्ले डिफेंसिव। और एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ फर्स्ट हाफ में हुई। कॉन्टे सॉ दैट, कॉन्टे वेंट टू द ड्रेसिंग रूम, चाटे वाटे मारे होंगे दो चार किसी को पकड़ के, मुझे नहीं पता क्या किया होगा। बट यार उसके बाद वो निकला, टीम सेकेंड हाफ में अलग सी टीम दिखी, एंड सडनली उस टीम को पता नहीं क्या हो गया, फ्रॉम 2-2 स्कोर सेकेंड हाफ में, 2-2 से 6-2, क्रेजी, अनबिलीवेबल भाई। हाँ सच्ची भाई, मतलब ऐसा स्कोर लाइन जल्दी देखने को मिलता नहीं है भाई बहुत प्रीमियर लीग मुश्किल। में। एंड कॉन्टे की टीम 6 गोल्स मारेगी, यू नो
मतलब बहुत मुश्किल है कॉन्टे की टीम को 6 गोल मारना। हम्म। एंड स्पर्स, स्पर्स में ऑफ कोर्स केन एंड सॉन जब चल जाते हैं तो एकदम जादू कर देते हैं। यू नो वो लोग का पार्टनरशिप कुछ अलग ही लेवल का है भाई। सॉन तो ऑफ कोर्स आज तो भाई लास्ट सीजन का सॉन अभी दिखा रहा जॉइंट। है वैसे, मैं इस पे काट रहा हूँ, सॉन को अभी दिखा रहे हैं वैसे कि उसको मैन ऑफ द मैच बॉल मिला है, क्लियरली डिजर्व। और अब भी जाके वो स्माइल किया है भाई बंदा, ऐसा लग रहा है आज उसको हैट्रिक चाहिए था स्माइल करने को। उसने फर्स्ट गोल हाँ। मारा ना, उसने स्माइल नहीं किया, सेकंड गोल मारा ना तो ही वाज लाइक मैं यहीं हूँ, अभी भी मैं कहीं गया नहीं हूँ। एंड थर्ड गोल जब मारा ओके। ना उसने, सेकंड गोल में उसने सश किया था, मुझे याद है, लेफ्ट फुटेड स्क्रीमर मारा टॉप कॉर्नर, उसने सश किया सबको। थर्ड गोल जब मारा ना तब उसने बोला मैं यहीं हूँ भाई, आई एम, मैं कहीं भी गया नहीं हूँ, आई एम स्टिल द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम बिसाइड केन। और वो डिजर्व्ड है यार सॉन। यार उससे भी ज़्यादा बुरा मैंने एफपीएल टीम से निकाल दिया मैं कल उसको। यही होता है। अरे वाह कसम। अबे पूरा टाइम मैंने उसको अपने साथ रखा था टीम में, ये सोच के कि वो कुछ करेगा कुछ करेगा कुछ करेगा, कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि शायद कॉन्टे उसको निकाल देगा, या मुझे लग रहा था कॉन्टे शायद उसको बेंच करेगा, बात चल रही थी। बट लेकिन हाँ। यार मतलब क्या यार, उजड़ गया रे मैं भाई, मेरे कितने पॉइंट्स चले गए। हाँ। बट यू नो यही तो है प्रीमियर लीग की बात, यू नेवर नो कौन खेल जाए। तो फिर जादू तो है प्रीमियर लीग का, यही सबसे बड़ा जादू है। हाँ। और लेस्टर की बात करें तो क्या लगता है, मतलब भाई प्रीमियर लीग विनिंग टीम ऐसा खेलने लग जाए? प्रीमियर लीग विनिंग तो भाई वो तो सारी के टाइम पे थे, और ये लोग जैसे क्या बोलते लीथल है पता है लेस्टर सिटी। हाँ। मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ अगर अगले 2 घंटे में ये न्यूज़ आ जाए दैट ब्रेंडन रॉजर्स हैज़ बीन सैक्ड। वो डिजर्व करता है हाँ। सैकिंग। पहली बात तो तू वार्डी को बिठाया कैसे आज के मैच में, स्टिल दिस इज़ मिस्टीरियस। और और अच्छे अच्छे प्लेयर्स यार, आयोजे पेरिस बेंच पे था इफ़ आई रिमेंबर, और इयन नाचो बेंच पे था, एक और अच्छा स्ट्राइकर। पैटसन डाका को स्ट्राइकर पे रखा, स्पर्स जैसी टीम के सामने जो डिफेंसिव खेलती है, जहाँ तुझे स्ट्रेंथ लगाना है, जहाँ तुझे हाइट यूज़ करनी है, अपना पूरा गेम यूज़ करना है, एक्सपीरियंस यूज़ करना है, वहाँ तो एक यंगस्टर को उतारता है जो पेस है जिसके पास, सिर्फ और कुछ ऑफर करने को है नहीं। तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हाँ। था कि तू स्पर्स के लाइंस को काट देगा एंड डाका पेस यूज़ करके निकल जाएगा? दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी डिसीजन, मेरे सर मेरे से को ऊपर लगता था। है रॉजर्स ऑलरेडी सॉ इट कमिंग, एंड वो कुछ प्रेशर में आके कुछ और ट्राई करने गया। यू नो दैट वन गेम दैट यू ट्राई समथिंग न्यू और वो चल जाए उस टीम के सामने, हम्म। थोड़ा कंफ्यूज हो गया रहेगा किधर ना किधर वो बट इट प्रेशर में बट आके। इट वाज नॉट द वन गेम टू ट्राई दिस। हाँ, वो तो बात सही है, भाई ये टॉप क्योंकि ऑफ 6 कोर्स टीम है, उसके बाद सारी टीम्स नेशंस लीग में जाएगी तो उसके लिए प्रिपेयर यू करेगी। नीडेड टू फिनिश दिस इन पॉजिटिव वे। भाई अभी क्या हाँ। होगा, लेस्टर के बोर्ड के पास एम्पल्स ऑफ टाइम है, लेस्टर के बोर्ड के पास परफेक्ट टाइम है सैक करने का, क्योंकि कोई नया हाँ। मैनेजर आ सकता है, 1-2 हफ्ता ले सकता है इस क्लब को समझने में, प्लेयर्स को समझने में, एंड ही कुड बिल्ड हिज ओन टीम। तो भाई हाँ। आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स हैव पुट हिमसेल्फ इन अ मैसिव डेंजर। इफ़ यू आर सेइंग कि वो ट्राई कर रहा था कुछ एंड वो ट्राई करने के चक्कर में एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, मे बी दैट्स द करेक्ट रीज़न। आई थिंक ही हैज़ नाउ लुक स्टूपिड भाई, पूरी तरह से स्टूपिड दिख रहा है, वो चूतिया ही बन गया है, एकदम कट गया है बराबर बंदे का। हाँ। हाँ। क्रेजी क्रेजी, बस सॉन यार, सॉन ने सरप्राइज कर दिया है मुझे, आई वुड नॉट लाई भाई, मैं सरप्राइज्ड बैठा हूँ, एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड राइट हियर भाई, क्रेजी है ये सब सॉन सिचुएशन। ऑलरेडी बोलते हैं ना, उसको अपना फॉर्म चाहिए था किसी ना किसी गेम में। एंड हाँ, यू नो मिल गया भाई। बरोबर नेशन लीग्स के पहले ही मिला तो बहुत मैं सही है। एक हाथ में बंदे के पास मैच बॉल है, एक हाथ में बंदे के पास ट्रॉफी है प्लेयर ऑफ द मैच हाँ। की। हाँ। सही है यार, सही है भाई, बंदे के मजे हैं, टॉटनम के मजे हैं। टॉटनम आर राइट नाउ टाइड एट द फर्स्ट प्लेस विद मैनचेस्टर सिटी, they currently have a 6 goal difference. I व्हाट अबाउट आर्सेनल? Arsenal, I think Arsenal have fallen down. I think Arsenal are third or fourth position if I remember correctly. So
City are currently on 17 points with 17 goal difference. As we know, Haaland has gone absolute monstrous today. He has Hmm. scored only one goal, but still, I mean, he's something else, man. He's a machine of a machine. I think he will break everything, every record that has ever existed in football, if he continues to play like this. And Hmm. talking about Tottenham Hotspur, they are on 17 points as well, but with 11 goal difference. So they are currently 6 goal difference apart between Manchester City and Tottenham Hotspur. So I expect them to continue this form and challenge Manchester City for the title. There should be हाँ, someone to challenge Manchester City for the title, man, cause it will get boring right. if this हाँ, continues till सही बोल रहा है। December. If this continues till December, everything will get boring if Man City only dominates the Premier League. ये तो बात है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीम्स दिख रहे हैं ऊपर जो टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी लिवरपूल नीचे है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई सी देम कमिंग इन द इनसाइड द टॉप 4। Hmm. एंड ब्राइटन नीचे जाएगी, ऑफ कोर्स यूनाइटेड भी अच्छे फॉर्म में, यूनाइटेड भी I किधर ना think, किधर घुसने का I देखेगी think, टॉप I 4 के think, I अंदर, think, I कैसे think, ना कैसे। I think. मैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट टॉप टॉप 6 ऐसा रहे कि सब लोग बोलते हैं ना, हर हर English एवरी पकड़ ले. सेकंड टीम इक्वल पॉइंट्स में है। Uh, मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। hmm. I think City will win the league. If you're talking about the league, who will finish at the end of the season, who will win the championship, it would be Manchester City. I think they will obviously cruise over everybody, and they are more consistent. They have more squad rotation things, that all. So Man City would be finishing number one. I expect I expect Arsenal or Tottenham Hotspur this season to finish on the second position. Not the Tottenham Hotspur that I saw today, I'm saying on that basis, but I am expecting them to finish second because of Conte. Conte is the serial winner. Conte is the man who knows how to nick a result when everything is going bad. So I expect Conte to get something of the game, and I think Vipul is gone. So let me just add him again. ओके। So Vipul have just या flicked on his camera. I'm sorry for that, guys. So everyone watching, anyone watching right now, please subscribe to the channel and like the video, so that gives us a little bit of motivation to carry on and talk about this. But talk about the main topic on the title remains the Brandon Rodgers sacking, Vipul. हाँ, What do you think, सैक ऑफ कोर्स हो गया होगा यार, लास्ट बैठा है तो brother? अभी भी मतलब लेस्टर के पास मैं बोल सकता हूँ नहीं, टाइम है ब्रेंडन रोजर्स को देने के लिए टाइम, क्योंकि प्रेम ऐसे ही करके ना बोलते हैं ना, ये सीजन भी निकल जाएगा। एंड लेस्टर ऐसी टीम नहीं है जो चैंपियनशिप फुटबॉल देखना चाहती हो। अच्छा. तो लेस्टर के ओनर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, तो मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ करेंगे ही वो लोग अपने टीम को सुधारने के Hmm. लिए। एंड द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू इज सैक द मैनेजर। Hmm. Check your phone, by the way. And हाँ, yes, I expect that same thing. I think Brendan Rodgers should be gone. Brandon Rodgers deserves the sack. The thing he has done with Leicester City's potential squad is he has lacked too much depth. There is no one to be rotated right now, and whoever came as a substitution in the second half didn't have enough impact on the squad, didn't राइट, have enough impact on the match, and that's what we saw in the Leicester squad today. They were very good in the first half, by the way. I saw the match and they were very good in the first half. They were winning the balls inside Spurs' own box, and they were playing a very high line in the first half. I mean, राइट, Johnny Evans, who doesn't have enough pace, and I have just uh, have just viewed the Son goal again, man. His right foot goal, the first one, man, absolute screamer, man. The guy is crazy. I just can't believe it what I just saw, man. A hat trick inside 13 odd minutes. Man, that guy is crazy. He's gonna break the internet today. I think so. He's gonna break the internet. राइट, And I was talking about the Leicester squad. Yep. So they were very good in the first half. They won the ball in the attacking half, and they tried to attack more and more. And eventually they got two goals. A very good two goals. The Madison goal was absolutely brilliant. If you guys just go back into the stream and watch my reaction on the Madison goal, I was absolutely
out of my seat. I was standing like what the hell just I just saw, man. That Madison goal was crazy. But later on, I said in this half break that Conte would do something with this team. Conte will make them play differently, and they will come like a different team in the second half. Tottenham will come like a different team in the second half, and they did. And look at the score line. It's 6-2, from 2-2 to 6-2. That's what Tottenham Hotspur and Antonio Conte can do. Right. So, What do you think of this, Spurs lineup? The formation. Conte always go with the 3-4-3, yep. and he has managed to put up such a good team Hmm. in this formation. Hmm. So do maybe next season or maybe the third season, do you see this formation breaking somewhere? The players, Ivan Perisic, he is like 34. Then he has got good players like Richarlison, then Kulusevski. Sorry, I cannot spell his name Kulusevski. properly. Kulusevski and Hoylbjerg. So Højbjerg. Hoiberg, sorry. So and Dyer, I guess he is also getting old. Yep. So in maybe next seasons, how do you see this team doing? I think this team If has a not lot this of. season, if not this season, Conte is not able to win the Premier League. How do you see this team winning the Premier League next season? How can he improve? I don't think he needs to improve much. Conte Hmm. obviously has a very unique part of playing the game. He has a type of game like he don't want to concede early on. That's the main motto of his game. He wants to definitely score the goal, but his main aspect is not to concede the goal early on. And I think the players will be fine. I don't think the players he has got right now is short of anybody. The bench strength, you look at the midfield, even Wes Bissouma, who he has signed in the summer, has still not started for Tottenham Hotspur this season, if I'm not mistaken. So that shows Hmm. the depth of the squad. That shows what the squad is capable of, and that shows what Antonio Conte can achieve in the upcoming times. And but you know the big news: Antonio Conte is not signing the contract for Tottenham Hotspur. Okay. The Why latest, so? I don't know. I think he's unhappy with the board. He's unhappy in the certain reason that they are not spending enough money, or they are not showing enough ambition for his plans to continue. So he's a little bit of unhappy. I have seen that somewhere in Twitter, but I could be mistaken. If I am so sorry about that, but I think I am correct about it. But looking at the short-term team, man, they could rip apart the Premier League. If they are on their day like they were today, they could rip apart this league. I think so. Right. What do you think about them? And sorry, I did not catch your question What do you think about them? about Spurs. Yes. My Spurs, as you said that the board is bit of unhappy with Conte. Hmm. So that is the thing about Conte. Some people like him, some don't. Even with Chelsea board, yeah, had few problems. Hmm. So the formation, sometimes it clicks, sometimes it doesn't. So this was a downgrading Leicester team. They were already in a poor form, so Spurs had to perform. So and if you compare Spurs with another team, I still see Conte's team needs improvement somewhere. Okay. Yeah, So improvement in what sense? In the attack, in the midfield, or in the defense? I guess in the midfield somewhere. I don't think so, mate. Maybe if you're talking about the attacking midfielder, in that sense, I would say Yes, yes. But in the defensive, they have got too many players. They have got Højbjerg. They even yeah. Bentancur can play like a holding midfielder, and they have got the new signing Wes Bissouma at that position. Yes, So they have they did not even play Romero, if I'm not wrong. Christian Romero is a central back mate, and he has played the Yeah. today's match. Romero, Okay. Lenglet, and Davidson Sanchez were the three central backs in the team. Okay. What about Dyer? He scored a goal, right? Oh yes, Dyer was in. Okay, so I might have got it wrong. So it might be Dyer, Sanchez, and Langley.
Yeah, Yes, I so might be Romero wrong. wasn't playing the game. Okay, okay, That's the okay. Yes, thing. yes, yes, So yes. their defense is good. Their defense is stacked. Right. Yeah, I think they don't have Foyth. Foyth Foyth has transferred to Villarreal seasons before, man. So I must be fuming. And I'm just seeing the Brendan Rodgers interview right now on the TV. I'm currently laughing at him, man. What the hell is it thinking, yeah? What what the hell are you thinking, brother? What are you gonna achieve in future? I just don't know, man. He was sacked from Liverpool, lack of ambition, lack of play, and he was this close to win the Premier League with Liverpool. Whipple, if you remember, Brendan Rodgers, yes. the Steven Gerrard, I famous I I Steven Gerrard. also remember before signing I mean sorry sacking Lampard, Mm-hmm. Chelsea were trying for Brendan Rodgers and he was almost close to joining Chelsea before Tuchel. Okay, that's Yes, something new. I didn't knew that. That's something new. I yes. today I have just grasped it. So But the Leicester board made sure that they needed Brendan Rodgers at that time, 18 months ago, if I'm not wrong. hmm Yes, I don't but think yes, yes, you go ahead. I don't think that was a bad signing. He won them the FA Cup against Chelsea, the final that was, if I'm not Right. mistaken. So he won them one trophy, and that's what you expect from a mid-table club like Leicester City. They are not amongst the top six, man. You just can't compare them to the top six. Definitely, in the previous years, Leicester have made themselves the top tier teams, one of the top tier teams, but they're still way far, from the top six teams. So I don't think whatever we were comparing them from is fair. Leicester are still from the mid-table clubs, and Brendan has won them one trophy, so that's good from their point of view. And I think that's the only thing that the owner would be thinking before sacking him. That he won them one trophy, and uh, I think I think in one season they were just a point difference that was from entering the Champions League, if I'm not mistaken, in the 2020 season, in the COVID era. They even played Europa League. They even played Europa League. That was the only season they played the Europa League because United took the Champions League spot in the last game of the Premier League. United went into the Champions League group stage by 1 point. So that was the difference. That close of a difference it was. So Right. Brendan was a good manager for Leicester City. You can't be mistaken on that. But due to his lack of depth in this squad, due to his lack of, uh, you know, decisions in this squad, and maybe he has lost the dressing room. I think so. Maybe he has lost the Right. dressing room, and the people who are around him and who are supporting him have suddenly started to lose the grip on Brendan Rodgers. I think he's gone, man. He's gone. I think he will be sacked. Leicester in the 2019-20 and 2021 season, both season they finished fifth. I remember that. So Yes, yeah, I do. so I but Brendan Rodgers wasn't appointed that day, if I'm not wrong. Wasn't appointed by who? Uh, Brendan Rodgers was not appointed by Leicester, if I'm not wrong. Was he the manager back then? Yes, Okay, yes. I remember it correctly because Ole was the Manchester United manager, and I remember that okay, day when when Leicester was this close to entering the Champions League. I right, remember that day perfectly. right. Was it So the final game of the final season? game of the season when Jesse Lingard Right, scored in the additional minute, 90 plus 3 or 90 plus 4th minute it was. I still right, remember that right, game correctly in my head, and I know I'm not wrong. right. It was a very minor difference to enter the champ. Okay. The new manager, if Leicester, of Sack course, him. uh, Okay. sacks him. Hmm. So what is the new manager? What is the new manager has to do? What does the new manager has to do to Has enter to the do Leicester City? in the Leicester squad. I think What firstly changes he has to firstly do first? firstly he has to earn the dressing room.
I think the dressing room is a mess. I think as a neutral fan, when I visit, when I see Leicester City play, I think there is a lack of chemistry in the team. There is a lack of depth. First of all, there is a lack of depth. There is a lack of chemistry. I think Brendan has lost the dressing room. The new manager that comes in has to win the dressing room. He has to, cover up everything from the support staff and everything. He has to organize them. That's the first thing. And the second thing, he has to pick his 11. He has to be decisive on what he will finish his season with. The one thing you don't want as a newbie, as a new manager, is a disorganized squad, and that's what Leicester City are right now, a disorganized squad. Anyone can play in any match, so it's very indecisive. I hope when a new manager comes in, he would be decisive. He picks his 11, he goes with it no matter what, and finishes the season with that 11. That's the first thing I would love if I am a Leicester manager. Right. Yes. So I think maybe this is the time to wrap up, or maybe more 10 to 15 minutes. I think Mm, it's good we to. have almost covered all the points. Hmm, that's correct, by the way. But still, I am seeing some growth. You know, if I mean. Okay. Yes. So another question: if you were the Leicester manager Hmm. today, Hmm. what you have done better? What would have I done better if I was the Leicester Yeah, manager today? to at least At least do nick something. the game Yep, somewhere. yep. I understand Yeah, your question. The and first not thing, lose by 6 goals. definitely, I wouldn't have lost by 6 goal. I would bet you any money. You know why they have lost the goal? You know why they have lost the match by 6 goals? The number one reason was the defense. The number two reason was he was trying to kill the game where they were when the Tottenham Hotspur were 4-2 up. He tried to kill Right, the game by playing more attacking, like in FIFA you try to go ultra attacking mode. He tried to do that. I think that was a mistake. The first thing I would do is play Vardy. Why the fuck did you play Daka, man? I still don't understand. Daka is not the type of player you want in this match. Conte is a typical coach who plays three at the back, three muscular, three quick, three very heighted players who will not let you breathe, who will not let you even breathe for a 1 second. So you need Vardy, who is at least not, he doesn't have a header advantage, but has a pace, but has experience, has something advantage, has a strength. Definitely, he has experience that can count in. So I would put in right, Vardy. I would have, I would have, maybe shuffled a midfield bit. I would have used Tillemans as a holding midfielder. And Madison, the number one thing I didn't point out in this game was Madison was playing on the right hand side. Vipul, Madison was oh, used as a right mid. okay, What the fuck was he thinking, yaar? I mean, when I saw the lineup, I was like, no, that's a mistake. They put something on the paper, but they usually don't play like that in the game. But he played right, like a right midfielder in the game. That's such a mess. This team is a mess. And you have Jose Perez on the bench. You have Kalichi Ian right, Nacho, the striker, the guy who is so desperate to play, the guy who is so desperate to score. You have him on the bench. And yeah, it's just a mess. This team is a mess. You should start Madison on the cam. You should have put the two holding midfielders as Telemans and the other guy. Who is the other guy? NDD. You should have put these two as a holding midfielder, Madison as a cam. You should have started Vardy at the striker, Jose Perez on the left, maybe Harvey Barnes on the right. I am definitely wrong on that, but I will still stand on that. Left and right. Or maybe Ian Nacho on the right. Play as a two striker. Shuffle the formation of a bit. Play 4-3-3 or play 4-2-2. Try to shuffle it. But I mean, it was absolute disaster. The team pickings and everything was just a disaster, man. I think right, everything went off today for Brendan Rodgers. I think he's gone. He's definitely gone, brother. It's finished. right. What you would have done if you were the manager today? I would have done almost the same thing. We need wingers in a team. Like you cannot play an attacking midfielder in a winger role, or Seriously, in man. the flanks, right? He could have rightfully, you said he could have chose for 4-2-2. He
he could have played through the midfield if he out of choices for wingers, Hmm. Correct. but he should have done something in training that you know could have break this Spurs defense. Hmm. So I would have done almost the same thing, Hmm. and try to create something out of this Leicester team. Yeah, I would have done the same, but I think 4-2-2 was the best formation. If you wanted to play the midfielders rather than the wingers, 4-2-2 was the formation Right, to go. right. Uh, it all. Or he could have played five at the back and kept a clean sheet somehow, Nah, that wouldn't have and worked, Vipul. kept a nil to save his Yeah, job. that's what I'm trying to say. Maybe he could have He tried that. didn't need a nil-nil, Vipul. A draw wouldn't save the Brendan Rodgers job today. Right. The only thing that would have saved, that will save Brendan Rodgers' job, would have been the win. And I think he will get sacked, but I still have no information that he will get sacked or no. But it's a yes from me. He will get sacked. Definitely, he will get Yes. sacked. No manager deserves to be in the club after what has happened recently. This club is a Right. genuine mess. Okay. And what about Spurs to keep the form, static like this? What should Conte do next? What should Conte do next? You know, after the Just try to do what he af- has done till now. I hmm, think play like he usually does. Three at the back, perfect. Good central backs. You even have a rotation player. But the only thing here is the Champions League. When the Champions League is here, you have to rotate the squad. But he has too much depth in his squad. I think he will be fine. I don't need to, judge on Conte because Conte is a masterpiece, man. He creates his own team. He creates his own 11. I think he will be fine. His midfielders are brilliant. His attacking threat is next level. So I think everything is fine for Conte. He just needs to breathe. He just needs to put his tactics on right place. Yeah, just move on. Just try to challenge Man City, man. It it is only thing what we as a neutral fan want to see. Someone challenging Man City every season. Cause Man City is the only team in this world right now who is most consistent team. I would say the most consistent team in 4 5 years. Manchester City. absolutely. That is the only team to beat in the Premier League, in the Champions League, in every league that Man City plays. So So that's what Spurs would be playing Arsenal next on the Spurs. 1st of October. You know what? We have got some big games coming in the October. Right. So Spurs and Arsenal, and we have Manchester City and Manchester United. The Manchester Derby is coming as well. Right. So that's another big matches. So we definitely have got some actions in October, man. uh, um, some high level actions. So guys, whoever is watching this and whoever will watch in future, please tune in on October, and we are definitely doing more watch alongs of UEFA Nations League as well, and we have done a video on UEFA Nations League of what you can expect and what players are expecting of the league, so you can check out in our channel in the video section. And I think we have covered everything that is possible, Vipul, right? Or is there anything Right. else we could do? Because I think we Mm, are doing pretty well in the video. yes. Whoever is watching, please make sure to subscribe. Please make sure to subscribe, guys, and definitely like the video. At least like the video. This is how we come to know that you are at least engaged with us, you agree with us, or you like what we are doing. So it gives us a little bit of motivation, a little bit of more fun to do this type of videos. So please, just Right. like and subscribe, and yes, do that. That's That's it from our side, guys. And maybe we could do a maybe we would do a reaction on this, more reaction on what could have done and what would have gone wrong for Brendan Rodgers. So see you on the other side, guys. Until then, peace out.